सर। क्या सर जैसे हाँ सर, आप एक के बाद एक बोलिए ना, दो जन साथ में मत पूछो। 450 पॉइंट प्लस था, अभी माइनस में आ गया मार्केट। हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या है। आई एम सेइंग दैट द मेन ट्रेंड ऑफ द मार्केट विल नॉट चेंज। ये जो बाजार बढ़ा था डाउ जोन्स, इट वाज बिकॉज जॉब नंबर्स बहुत अच्छे आए, तो वो लोग ने डाउ जोन्स ऊपर में 600 पॉइंट हुआ। बट उनको ये नहीं पता है कि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ने वाला है, तो ये सब मतलब नहीं है डाटा का। तो जब रियलाइज होता है कि ये यूजलेस है डाटा, तो गिर जाएगा और गिरेगा, डाउ जोन्स बहुत गिरेगा। अपना बाजार नहीं गिरेगा कोई भी हालत में, क्योंकि अपने वहाँ सब कंपनियां सोना हीरा जवाहरात बनाती है। जैसे मैंने इंडिगो का बताया कि 8,000 करोड़ का नेगेटिव रिजर्व है, हर क्वार्टर 1,500 करोड़ का लॉस करता है, एंड मार्केट कैप इज $69,000, अरे रुपीज। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, रबिश दिस इज। अडानी का बोला 38,000 करोड़ का टर्नओवर, 400 करोड़ का नफा, 1% का धंधे के लिए। सो वॉट एवर यू आर बाइंग stupid shares, and if not stupid, you are buying it at a very high valuation. That's what I want to say. Shashank, you want to say anything? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yeah, then So shall I we want take to. it? Yeah. Yes, I am. देवेश भाई, आप अपना हाथ नीचे करो। हाँ बोलिए। Am I audible to यस everyone? यस यस यस। Yeah. So basically, sir, same points are on valuation. I want to add, like as we have seen के अभी जो IPOs launch हो रहे हैं, like recently अभी आपने देखा होगा बीका जी की IPO है, फिर एक ग्लोबल हेल्थ केयर करके कोई कंपनी है। तो आप फिर वैल्यूएशन देखेंगे तो क्लियरली पता चल रहा है कि 10 टाइम्स 15 टाइम्स ग्लोबल हेल्थ केयर करके कंपनी है, 100 टाइम्स वैल्यूएशन पे आईपीओ लॉन्च कर। और क्वेश्चन इज कि कॉन्फिडेंटली कंपनी तो लॉन्च कर रही है, बट पीपल आर ऑल्सो एंटरटेनिंग दैम, सो समटाइम्स इट फील्स सर आवाज नहीं आ रही वापस। सर आवाज नहीं आ रही है वापस सर। अभी आती है? यस सर, हाँ। यस सर। अरे शशांक भाई, वो 200 टाइम लाने दो ना, आपका क्या जाता है भाई। लेने वाला खुश है, देने वाला खुश है, अपने कौन होते हैं। चलने दो जैसा चलता है वो। वाई यू शुड वरी। अगर आप ऐसा वरी करना चालू करोगे तो दुनिया में बहुत कुछ उल्टा हो रहा है, आप शांति से सो ही नहीं पाओगे। छोड़ो ना ऐसा, अपने को क्या लेना देना है। इट इट इज हाइट ऑफ stupidity, it is height of greediness, it won't last for long. That's what I'm saying. Yeah, शशांक। अनस भाई हाथ नीचा करो, सबको चांस मिलेगा। yes sir, absolutely sir, your suggestion is very good sir, but point is that कि जो हमारे बेसिकली जितने भी हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो they are putting their money on the basis of trust अरे कि भाई अच्छा भाई भाई भाई, तो एक्सक्यूज मी। आप मैंने तो किसी का वो ठेका नहीं ले रखा है, तेल लगाने गया इन्वेस्टर। मरता है तो अभी मरे, मेरे को क्या है। वो अपने को पूछ के करता है क्या।
काहे को दूसरे की चिंता करते हो? नहीं 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 4-5 हजार करोड़ है क्या आपके पास? 4-5 हजार नहीं करोड़ का है ना, बाद में किसी का चिंता, नहीं पहला अपना नहीं नहीं चिंता। नहीं, मेरा सर क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन आपको में यही पॉइंट पे आ रहा था सर, कि कि देर इज नो सिस्टम इन इंडिया के कोई एक्शन ले ऐसी सब चीजों पे। नहीं यार, आई डोंट थिंक एनी एक्शन इज रिक्वायर्ड. If seller is good and if buyer is wanting to buy, what will the regulators do? How will they judge that it is expensive or inexpensive just because you say so? No way. They will issue will come at the rate they decide. वो भरता है नहीं भरता है वो सामने वाले का प्रॉब्लम है. इसमें रेगुलेटर नहीं आएगा बीच में, फॉर श्योर. और एक डिक्टम है ना, बायर्स बिवेयर. प्लीज, बायर को हमेशा सावधान रहना चाहिए. और शशांक भाई, काहे को दूसरे का चिंता करते हो? तुम खाओ पियो मजा करो, इतना मत सोचो किसी के बारे में. आप अपना फैमिली के बारे में सोचो. और बोलिए शशांक भाई. सर, एनी कमेंट ऑन आई मीन ऑन एचडीएफसी ट्विंस? अभी अभी तो दोनों अलग है, एचडीएफसी लिमिटेड अलग है फिर भी, बट एक बार जब एक्चुअली निफ्टी में दोनों एक साथ ट्रेड करने लगेंगे, तो आपका सर, आई मीन व्हाट व्यू यू कैन सी ऑन के इतना बड़ा कंपनी हो जाएगा तो व्हाट मूवमेंट विल बी हैपन? क्या मालूम यार, वो तो अगले अक्टूबर में होने वाला है. अभी से काय को मैं चिंता करूंगी? सी, स्टॉक मार्केट is a very funny place. You think long term, but you act now. What is happening now is important for your survival. So, what's going to happen in October next year? I don't know. And very honestly, I don't know, and I don't play Nifty, so I don't care a fig for it. No way. Thank you. Yeah, Nasab, you are saying something. यस सर. Hmm. सर, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं शॉर्ट टर्म की 3 मंथ्स की, Hmm. सर वो रैपिडली इंक्रीज कर रही हैं. और सर Hmm. डॉलर इंडेक्स जो है वो ऐसे हो रहा है जैसे स्मॉल कैप हो, कभी 113 110, मतलब इतनी वोलेटिलिटी डॉलर इंडेक्स में पहले शायद बहुत रेयरली देखी गई हो. और सर Hmm. इसके कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट तो उनका चैनल डाउनवर्ड आ रहा है, बट इंडियन मार्केट्स का ऊपर जा रहा है. तो सर कंक्लूजन मैं ये नहीं निकाल पा रहा हूँ कि यहाँ से पैसा जा रहा है वहाँ लग नहीं रहा है. तो ये चीज़ मतलब हो क्या रही है, मतलब ये डाउन प्ले जब होगा तो ये कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि चीज़ें कोरिलेट नहीं हो पा रही है शॉर्ट टर्म के अंदर. आपका नहीं इन पर क्या व्यूज रहेगा? नहीं, पहले तो इधर से पैसा जा रहा है तो उधर लग नहीं रहा है. आप क्या बोल रहे हो? यस सर, उधर मैं हाँ जी, यहाँ से पैसा जा रहा है बट इमर्जिंग वहाँ लग नहीं मार्केट रहा. इमर्जिंग मार्केट फंड्स में 9% यील्ड है. किधर लगता नहीं है? क्या बात करता है तुम? ठीक है सर, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट्स का ही देख रहा था. हाँ तो आप यूएस का पहुंच गए, इसके लिए मैं भी यूएस पहुंच गया. ओके ओके. नहीं, इंडिया मार्केट का ट्रेजेक्टरी ऊपर है, यस सर. ऊपर ही रहेगा. ओके. निफ्टी बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत ऊंचा जाएगा. यहाँ से भी. हाँ हाँ, बहुत बहुत. लेकिन एक स्टॉक भी न्यू हाई नहीं करेगा, सिर्फ निफ्टी निफ्टी ऊपर जाएगा. छोड़ो ना यार ये निफ्टी का बात करके. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मेरे हिसाब से 12,000 पक्का आएगा, बस खत्म हो गया. अभी रोज का रोज मूवमेंट देख के मैं भी क्या कमेंट मारेगा, बोल. ओके ठीक है सर. यस वॉन्डे.
सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शरद सर, गुड इवनिंग समर सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर योगेश भाई, बोलो। सर मेरे एक पोर्टफोलियो में सर एक स्मॉल कैप बैंक स्टॉक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो मैंने सर काफी छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो दूसरा जो होल्डिंग कंपनी, सॉरी, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, सर उसका मेरा एक्चुअली मैंने 148 रुपीज़ का एवरेज में मैं उसको मैंने खरीद के रखा है सर। अभी वो अच्छा भाग रहा है, 270 तक आ गया है। और सर उसमें क्या है ना सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मर्जर होने वाला है, जो मर्जर रेशियो 10:115। तो उसके हिसाब से सर अभी भी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 40 रुपीज़ के डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है आज का जो भी ये चल रहा है। तो मेरा सर यही क्वेश्चन है कि सर इसको सर एज अ ट्रेडिंग स्टॉक यूज करके जितना हाई बन रहा है करके निकल जाए, या थोड़ा सर होल्ड करके रखें ताकि कुछ इसमें और भी गुंजाइश होगी, ये एक नहीं क्वेश्चन नहीं है सर। नहीं, आप स्टॉप लॉस रखो, जो परचेज प्राइस है वो टच होए तो बेच देना। ओके सर, ओके सर, ओके। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है सर, क्या था सर, ओ सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है सर, ये मेटल सेक्टर का जो सर अभी जो रैली चल रहा है 2-3 दिन से, ये कोई मतलब कि कुछ नया फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से रैली चल रहा है, या बिना मतलब के रैली चल रहा है? और तीसरा क्वेश्चन ये है सर, एक्साइड एंड हमारा जब बैटरी सर आज 10% भागे सर, वो उसके बारे में भी सर आपके बारे में आपका कुछ नहीं भी नहीं, अच्छा कमेंट। रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक्साइड और हमारा का सर पता नहीं सर, अचानक ऐसे ऐसे लगता है ना सर, मुर्दे को सर कब्रिस्तान में इलेक्ट्रिक शॉक दिया नहीं तो नहीं, अचानक ये क्या होता है भाई कि 10-20 करोड़ का एंट्री वो घुमा देते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है, पब्लिक पागल हो जाती है। और आप समझे नहीं जब मैं बोला ना उज्जीवन का, कि आपका परचेस प्राइस है वो स्टॉप लॉस रखो। अरे भाई, नफा होता है काय को किसी को पूछने जाता है? लगता है पैसे से प्यार नहीं है, ईगो से प्यार है आपको। चलिए। सर आप बड़े सर, उसलिए आपसे एक बार पूछना था, अभी समझ में आ गया क्या करना सर, कल वही करूंगा सर मैं। थैंक यू सर। थैंक यू। फैक्ट फाइंडर को भेजो। सी वन थिंग फॉर श्योर। हाँ शोभित भाई बोलिए। हेलो, हाँ शरद भाई। हाँ। शरद भाई, आपको एक बात पूछना था। बीईएल जो है, हम्म। वो मैं फ्यूचर में मतलब मैं खुद एक चार्ट लिखता हूँ, इलियट वेव थियरी। हम्म। तो मुझे वो शॉर्ट करना लग रहा है काफी हैवीली। तो सर उसमें आपका सर क्या व्यू है, फंडामेंटली जो नंबर्स वगैरह है? नहीं नहीं नहीं, एक क्या है दोस्त, आपका व्यू है। ओके। हाँ अपन स्टॉक तो नीचे नहीं जा रहा है अभी। ओके। हाँ तो अगर मैं आपकी जगह पे होता हाँ तो दूसरा स्टॉक देखता है जो नीचे जा रहा है। आपने बीएल से शादी की है क्या? हाँ हाँ तो इतना सारा स्टॉक है, कोरोमंडल है, एसआरएफ है, फिर वो पोली कैब है, ऐसा सब बेचो ना। काय को एक ही स्टॉक पकड़ के बैठना है कि जहां पे हाँ। अभी मजबूत है वो। ओके दिस सर। इज दिस इज द प्रॉब्लम विथ ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेडर्स। आपके दिमाग में आया बीएल, मेरे दिमाग में क्या आता है, जो नीचा जाता है वो आता है। हाँ So change your philosophy. Don't be enamored by one stock जो कि आपको कभी लॉस दिया होगा, वॉट एवर इट में बी, तो उसको दिमाग से निकालो हाँ हाँ और दूसरा स्टॉक पकड़ो ना। आज 135 स्टॉक डाउन थे तकरीबन फ्यूचर में। हाँ। राइट। हाँ, तो फिर जो ऊपर है उसको क्यों आप सोचते हो? चलो, आपने डीएम किया है ना मेरे को, मालूम है, मैं पढ़ा आपका। हाँ सर, और सर और एक चीज मेरे को पूछना था, मैं आपको मतलब ऐसे इनडायरेक्टली जानता हूँ। 10 साल पहले का आपका एक स्टोरी था, मतलब जो जीटीएल इंफ्रा था। हाँ हेलो।
हाँ बोलिए। हाँ सर, 10 साल पहले का एक बात है, जो जीटीएल इंफ्रा, आप उसमें मतलब है, सब हैवीली मतलब उसमें बेरिश थे कि हम्म, कुछ नहीं है कंपनी ये, मतलब तभी कुछ 50-55 मेरे को याद है जो प्राइस था। और हम्म, मैंने मैंने घर पे मेरे अंकल, अभी मेरा तो कुछ इन्वेस्टमेंट था नहीं, आई वॉज वेरी यंग, 17-18 साल का था मैं। और तो हम्म, अभी मेरे अंकल और मेरे भाई को मैंने बिकवा दिए थे, तो और वो एक्चुअली में वो पूरा वो स्क्रैप हो गया था, जीटीएल इंफ्रा। और एक था केएस ऑयल्स, हम्म। जो 20-22 रुपए का था। और आप उसमें मतलब हैवीली बेरिश थे, और आप मतलब अपने, तो सर उसमें मतलब वो क्या, व्हाट वाज द रीजन एक्चुअली, मतलब इन द बैलेंस शीट इट वाज अ फ्रॉड और समथिंग एल्स? Yes, 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 yes. Nothing else. बैलेंस शीट वाज दिस थिंग। Yes. ओके सर, एनी ऐसी कोई स्क्रिप्ट जो मतलब ऐसा ओवरऑल लाइफ टाइम के लिए, मतलब ऐसा, मतलब शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखते रहूं मैं, मतलब कुछ एंडिंग डायगोनल मिले मुझे, या कुछ फिफ्थ वेव कंप्लीट होए कुछ। वो वेव वेव तो मेरे को नहीं आता है, बट मेरे को लगता है एसआरएफ, एस आर पोली एफ, कैप, एसआरएफ, पोली कैप पॉलीकैप, और कोरोमंडल, वो सब फर्जी बैलेंस शीट है। हंड्रेड कोरोमंडल। परसेंट ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। या जी, श्रीनिवासन। Good evening, sir. Good evening, everyone. यप यप। Nothing major new news. The real economy continues to be in pain. So I know everyone's more about stocks and all, but I'll keep reminding everyone, आप जो भी ये momentum दिख रहा है, stocks are moving up, Nifty 50, all that. Like Marico came out with results. It's a very well-run company. Parachute is like the brand in its category. उनका portfolio भी अच्छा है. But volume decline, revenue profit decline. So there's a lot of pain in the economy. It's spreading upwards. So whoever's saying economy is rocking, happy to have a chat. Stock prices, of course, will do their own. But I can't help comment, sir. ये कितनी शर्म की बात है, बायर्स मतलब बायर्स को बहुत शर्म आ रहा है, आखिरी आधे घंटे में आके खरीद के जा रहे हैं चोरी चोरी. What is this market? I can only laugh a bit, sir. Nothing major other than this. No, now I did not see properly the results of Marico, but can you analyze a bit for the listeners? I didn't go through the details, sir, but it's got a very clean book. They don't hide stuff and all. So the revenue was down quarter on quarter. Profit was sorry, year on year. Profit was down year on year for the quarter. And what FMCG walas we are looking for is now these are clean comparisons, sir. सब निकल गया है, कोविड ये वो, मतलब लॉकडाउन अनलॉक वो सब बेस से हट No, गया है. last year was COVID time, this period. इतना नहीं था सर, जुलाई अगस्त सितंबर तक थिंग्स वर, आई मीन एटलीस्ट फॉर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल वाज रनिंग. um so yeah, not in full flow, so it just makes the numbers worse actually. Hmm. Also we've had a festive season, किसी का festive season rock नहीं किया है, whoever I speak to, mobile fellows ये वो, nobody's had a party. I saw two-wheeler numbers, four-wheeler numbers. Nothing is showing the exuberance that headline में कोई कुछ लिख रहा है, but वो same article के numbers में नहीं है वो. Another thing, Srinivasan, I read the tweet of Third Side. He said SRF guided last quarter that in textile segment they will show a bumper profit, and this time there was a bumper loss. So now they are saying in some other segment they will do well. So what do you have to say about this misguided guidance? It's very bad, sir. I mean, this is unethical. But if you see the Relaxo guys, they're being quite candid in saying they sell the mass market sort of lower end priced quality products. Unka bhi, they're saying a lot of stress in the market. So textile also, India market at least, a lot of stress. I don't know why he No, guided for bumper profit. no.
you went off to relax. So the Huh. point I was trying to make is, if any management that gives a guidance and falls totally opposite of it, and again it gives a guidance for another segment, what do you say to that management? I admire him, sir. He has found that secret, sir. You can fool some of the people all the time. तो उसका कोई loyalty जी है. No, but as a, It's very unethical, sir. I'll say it in plain English. yeah, okay. No, it's 80, 90,000 crore company. How it can do it? It Okay. won't last, sir. This this number up, sir. आपको बहुत experience है. We all know this number is not going to be there forever. 80,000, 90,000. To Srinivasan for buying SRF. Okay, DGRS, tell me. Good evening, everyone. Happy weekend to all. So, Indian markets, as you can all see, are very resilient even now, even though there's a global meltdown that's happening. But with the way the Fed is increasing rates and other central banks are also following suit, if you saw the Bank of England just had the biggest hike in 40 years, 75 basis points. So, I think asset prices across the globe uh, will come down. So I would be very careful at this elevated level of the index or even the major frontline stocks to put any fresh money. So just sitting on the sidelines and enjoying the ride. On the short side, I'm seeing some weakness in Apollo hospitals and some of the chemical names. If you see the today's result of SRF, Deepak Nitrite is due to post next week. I don't think the numbers of that also will be very good. And Tata Chemicals also, which is supposedly a good, well-run company. You saw after the results, it declined 5%. So I think this chemicals story with the high valuations, the results definitely are not justifying that valuation. On the long side, also today, as you saw, there was some strength seen in metals. So the story goes that if China reopens, then some of these stocks could see a bump up. Anyways, they're quite depressed. Other than that, I think the volumes and the price movement, everyone is seeing only from 9:15 to 2:45 p.m. There's barely any movement. It's just a gap up or a gap down. And then post that, there's a bump up. So, sir, my question was about that only. So, this volumes that is coming towards the end of the day, is this some genuine FI buying or just, I don't know what is happening. So, what are your thoughts on that? I wanted to know. No, it's operator driven and the operator is related to Adani. वही Right. ऐसे करता है बस और कोई nobody's interested. Yes, And sir. we are somewhere near the high Nifty. Correct. If you see, there was no new high in FNO stocks. Right, sir. Hmm. So बस वो इंडेक्स को ऊपर रख रहे हैं और people are buying and trying. So let's see I how know. long this continues. Yeah, yeah. Sir, Apollo Hospitals क्या लग रहा है sir on the short side? See, ultimately 1200 होएगा जहाँ से चालू हुआ था. It will जी, take time. right. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. और Sir, कोई fact finder is busy somewhere, so he will not be there, sir. He will be just as a listener, fact finder. हम्म, और कोई तो request नहीं है, sir. तो बंद करें. आकांक्षा, you want to speak something? आकांक्षा को दो mic. Yeah. He has done quite a research in the tech firm अरे हाँ, recruitment. अरे देव आकांक्षा, you ought to speak about IT यार. Hello. I've just been wondering about. I'm seeing Tech Mahindra also came out with its results, and Reddington Limited also. But all these companies are continuing with positive commentary, but still the numbers don't. I mean, numbers not just financial numbers, but numbers on the HR side also. Variable pay is going down. Number of hiring is going down. All of that doesn't make sense to me.
No, but yesterday Cognizant was down 14%. Accenture was down 6%. अपने वहीं ऊपर रहता है. How come? Yes, sir, that's what I'm saying. Like you keep saying there's some operator game going on, like your tweets say that. Yeah. This is almost playing with retail investors' money because suddenly someday it's going to burst. Yeah. So, but my question is like, how are you able to assess this? That maybe there is like, how are you able to see through all of this? What the companies or what the markets are showing? No, major. See, I look at the valuations abroad, then I impose it on the Indian companies, and deep down again, I look at the numbers. Just, just, just like that, and immediately, if something is wrong, it flashes a lot. In my mind, I have a nose which smells problem. The biggest problem is Infosys. 2 quarters ago, it guided very well, and the results in the next quarter were pathetic. Nobody on this earth asked why is it. So, but it stayed in my mind that this is something very, very bad. Now, similarly in Apde SRF, there is a Apde handle called Third Side. He had pointed it out that in last quarter they said everything is good, and this time there is a terrible loss. So, what is the use of management commentary? And tech sector, it's very easy to read through how much attrition, order deal size, and speak to the techies in the profession. They will give you a clear picture. All right, sir, but that is for companies that are listed outside. I mean, outside the IT sector, how do you access then? How are you able to assess companies which are probably not listed outside India? No, outside India, I don't mess around a lot. No, I didn't understand your question. No, sir, I meant here, like you're able to see through the positive commentary of the companies, say in this example, the IT sector, by checking their valuations outside India if they're listed on other exchanges. But how do you do it for companies which are not listed outside India? No, Or the peer comparison is there. No. Now, for example, LTI and LTTS are humongously overpriced. Not that I'm shorting it, but I'll short LTI at 3,000 because ultimately stock market is a function of P, nothing else. Expectation versus delivery. I Let's make it very simple. In India, everything is overpriced. all right, sir. All right. Yeah. विशाल भाई क्या है ड्राइविंग में है क्या समझ सर इनवाइट भेजा है हम्म हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं नहीं सर, ड्राइविंग में नहीं है, रोज नहीं होता है ड्राइविंग।
हेलो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं सर, मेरा थोड़ा व्यू कॉन्ट्रा है थोड़ा। मेरे को जिस तरीके से बाजार मूव कर रहा है, आ, हम्म सर मेरे को एक बार लग रहा है कि we are headed for a new all-time high. Markets हम्म are ignoring all negative news and everything. हम्म All said and done, the reality is, ठीक है, negative. मतलब there are a lot of red flags to be raised, but market is are ignoring everything, and eventually we need हम्म to respect the price. I हम्म mean, as a trader, sir, I would say that. बाकी सर, अदानी ग्रुप के अंदर अदानी पोर्ट मेरे को ऑनेस्टली काफी मोमेंटम दिख रहा है, एंड इट कुड soon be headed to 4 digits is what I feel. That's my personal view. बाकी सर दो तीन चीजें हैं, देखिए। अभी तक जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे ग्लोबली, वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई कंस्ट्रेंट इन्फ्लेशन. Now there are strong. China is giving strong indications that they are going to open up, and simultaneously, sir, दो data points की अगर हम मैं बात करूं, तो especially on aluminium and copper, the inventory stocks globally LME के अंदर have gone down. I mean, copper currently is around 4 days of inventories are left for copper, which would go down to 2.8 days by end of November. So, and with China opening up, that is one major reason why uh, commodities, the base metals are up pretty up today. Apart from whatever the other factors are, जो भी डेटाज है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा. तो सर ये सारी चीजों को देख के अभी ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड there would be a demand driven inflation which will come in, and if that comes in, so I think it will actually negate all the negative factors, and we could head for probably a new bull rally. I mean, that's my view. I don't know. Pretty early days right now, but these are few factors which I think everyone needs to keep into consideration and keep an eye on right now. That's it, sir. हम्म। तो यू आर बुलिश ऑन अडानी पोर्ट, लगता है 4 फिगर हो जाएगा। हाँ जी सर, लगता है, बिल्कुल लगता और किस में तेजी लगता है भाई? है. अरे सर, अभी तो अदानी पोर्ट में ही लग रहा है. हम्म बाकी फेडरल बैंक ऑब्वियसली मल्टी ईयर हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. हम्म तो फेडरल बैंक इज समथिंग विच आई फील शुड डू गुड. लॉरेंस लैब एक खराब है. लॉरेंस लैब ठोकने का तो है सर. हम्म तेजी के काउंटर भी हैं, मंदी के काउंटर भी हैं. बाय दी स्ट्रेंथ सेल दी वीकनेस, वही अब अपना तो सर सिंपल फंड है. बाय दी स्ट्रेंथ सेल दी वीकनेस, सिंपल. तो जो ठुकेगा उसको और ठुकाई करो, जो बढ़ेगा उसको लेते रहो. विशल भाई एक बात बताओ कि निफ्टी इज हेडेड टुवर्ड्स न्यू हाई, ओके, राइट. but why no Nifty stocks are in 52-week high? सर अभी वो तो आप बताइए सर. अब ऐसी सी आई फील दैट सेक्टोरियली सर चेंजेस हो रहे हैं. आप एक चीज समझिए ना, अभी आईटी को दबा के रखा था. एवरी नाउ एंड देन न्यू सेक्टर विल कम एंड पिक द रैली. वी यू आर सीइंग ऑटो स्टॉक्स हिटिंग ऑल टाइम हाइज. सो ऑटो इज बीन लीडिंग द रैली. मे बी सूनर और लेटर वी कैन सी पीएसयू बैंक. कल एसबीआई के नंबर्स आने हैं, एक बार एसबीआई के नंबर्स देख लेते हैं. मे बी एसबीआई, पीएसयू बैंक शुड बी नेक्स्ट लीडर. और प्रॉब्ली आईटी के अंदर कुछ पुल बैक आ सकता है, जिसका मेरे को ऑनेस्टली बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है आईटी के ऊपर. बट स्टिल आईटी स्टॉक्स आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ, आई वोंट से स्ट्रेंथ, बट कुछ पुल बैक दिखाई ही रहे हैं अभी फिलहाल. तो सर यही है. बाकी निफ्टी इज अ मैनेज. आप तो हमेशा से ही बोलते रहे हो निफ्टी हैज बी इट्स अ सिंथेटिक प्रोडक्ट, और वो इट इज अ मैनेज, तो उसको क्या ही देखने का. सर हम तो देखो, मैं आपको मालूम है सर, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी करता नहीं है. हार्डली मैं बैंक निफ्टी तो आई हार्डली ट्रेड, एंड निफ्टी ऑल्सो आई एम आई डोंट टेक टू मच ऑफ एक्सपोजर.
My major exposure is on stocks, so I can talk more on stocks, sir. I fully agree with you and I understand also and I know also. Now, about Indian market cap, I'll throw a new light. It's around 281 trillion rupees. Nifty 50 contributes 140 trillion. Nifty 50 is 140 trillion rupees. Means if there are 5,000 listed companies, 4950 companies are 140 trillion and 50 companies are 140 trillion. Now, how on the earth will there be a growth of other companies? And in Nifty also, you remove the top 15, the rest of it has no weightage, no value. So, all in all, we are talking of 15 to 20 stocks as our market. And with this addition of Adani Enterprise and Adani Port being always there, Mr. Adani is a speculator. He would ramp up everything to his benefit because he owns Gujarat Ambuja and wants to take the price up. He would check up the cement stocks and accordingly his cement will go. Now, Vishal is right as a trend trader, and I fully agree with him. But the other side, not related to Vishal, the other side is that our market is totally manipulated and rigged. Horrible it is. No market in the world functions like this with unrestricted, I don't know. They can do whatever they want, they can amend the laws they want. So, yes, for a trader, all these things don't matter. They just want to make money, and that is my motto: make money. Bhashan after 3:30. Between 9 and 3:30, just make money. We are in for a very rude shock when the pie will crumble. It's going to take real nerves of steel. And another thing, Nifty is approaching new high or almost its new high. Let's accept that. Volumes are pathetic. Now, a market without participation, how would you do it? Oh, sir. Now, couple of things. The other day, Sarvinder was also talking about the same thing. Close to 12 to 15,000 crores of mutual fund money is coming in every month in the market. I mean, कहीं पे तो इनको पैसा लगाना पड़ेगा ना. They can't keep अरे sitting भाई idle on साहब, the आप भी money. क्या बात करते हो? 15,000 करोड़ का बात करते हो एवरी मंथ, बराबर है? बराबर. 280 ट्रिलियन का मार्केट है यार, क्या बात करते हो? ये थोड़ी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 280 ट्रिलियन है। तो क्या मायना रखता है 10-20 हजार पर मंथ? सर ये जब तक 10-15 हजार करोड़ एवरीडे नहीं आता है ना, ये मार्केट सस्टेन होना नामुमकिन है। सर मैं थोड़ा going back to the spaces which in which you were talking 2 3 days back, you came up with a data point where you said India's GDP is around 2.4 trillion हम्म and our market cap is 2.8 trillion, and हम्म globally the market cap of any all the developed countries is 70
to 80% to the GDP. 60 to And 70%. 60 to 70, चलो 70 एक बॉल पास पकड़ते हैं. And India is almost at 120% to its GDP. Now, sir, all said and done, sir, एक चीज क्या देखिए मैं मतलब I've been bearish all this while, but markets are not supporting my view. So I have also changed my stance, and I feel कि markets can turn around from here as well. सर अभी दो दो मेजर इश्यूज क्या लग रहे हैं, जो चीजें मेरे को लग रही हैं. देखिए जो आप डेटा पॉइंट की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली इट इज इन पब्लिक डोमेन एंड एवरीवन द स्मार्ट मनी नोज अबाउट दैट, राइट? तो obviously there could be a reason why India is demanding a premium. आई मीन ऑल सेड एंड डन, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा भारत महान और वो सब सेकेंडरी चीजें, मैं वो चीज के ऊपर नहीं जाता हूँ. बट इंडियन मार्केट्स आर डिमांडिंग अ प्रीमियम. प्रॉब्ली दैट्स व्हाई दुनिया गिरा, इंडिया नहीं गिरा. दुनिया बढ़ता है, इंडिया उससे ज्यादा बढ़ता है. वो जब जब फेड का इंटरेस्ट रेट घटता है, ये बढ़ता है, इंडिया का मार्केट जो है ऊपर ही रहता है. So I mean, we in a way are not we are as markets, as Indian markets, we have been ignoring all the negative news. And given that now, obviously China also opening up. I mean, I'm giving a fresh perspective from all everything. Don't take me otherwise. I'm not नहीं नहीं, why will contradicting. I take? I mean, I'm not contradicting anyone's view, but that's my personal view. I'm saying that China also opening up. We can see a lot of demand-driven demand coming in. Obviously, why that is the only reason why base metals are up today. सो अभी तक हम मैं अभी थोड़ी देर पहले भी किसी से बात कर रहा था. अभी जो अभी तक यूएस और यूरोप के अंदर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, वो सप्लाई ड्रिवन, सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से इन्फ्लेशन थी. अब चाइना अगर ओपन हो जाता है और डिमांड की वजह से बेस मेटल्स के अंदर वो आ जाता है, तो वी कुड सी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैपनिंग इन ग्लोबल ट्रेड एज वेल. तो आई डोंट नो वेयर एंड हाउ इंडिया वुड बी प्लेस्ड, वेदर इंडिया वुड बी placed in a sweet spot, or whether India would be in a bad shape. Only time will come, time will tell. But the markets are saying probably India would be in a very sweet spot, looking the global changes which are happening in the global trade scenario. Sir, मेरा ये personal view है. मतलब I keep reading a lot of things, and this is what I am feeling. That's my personal view, and it's not gonna happen overnight. Maybe it can take 3 to 10 quarters probably. बट इट्स नॉट कि कल सुबह जाके ही बाजार में तेजी हो जाएगी या कल सुबह जाके बाजार में मंदी हो जाएगी. आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. See, to your answer, no practicing student of valuation will buy Indian shares. Buying momentum is different, okay? But based on valuation, nobody will buy. Who will buy Lever? Who will buy Tata uh, Consumer? Who will buy Maruti? So the point being, ये जो आपको निफ्टी ऊपर दिखता है ना, it is because of ITC, our power grid, NTPC, कोल इंडिया, ऐसा सब करके ये निफ्टी ऊपर दिखता है आपको. सो गुड लक टू यू. आई एम ऑल्सो वेरी वेरी बुलिश, but my trades as usual are bearish, because anybody who, no, I wouldn't say anybody who turns bullish at this stage, all the wishes to him or her. ले लीजिए, उठा लीजिए और कमा लीजिए. एक बात आप नहीं समझते हो, आपके दिमाग में भर दिया गया है कि इंडिया मार्केट डाउ जोन्स डाउन रहेगा तो भी ऊपर, ऊपर रहेगा तो भी ऊपर. यू आर कंडीशन टू. दिस इज एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ 2008. एग्जैक्ट. वो एनटीपीसी मेरे को मालूम है 270 हो गया था, ऐसा ही वो कुछ हो गया. तो विशाल भाई, वेलकम टू द वर्ल्ड. सर स्टे कॉल. 2000, सर मैं बोल रहा हूँ अपन भी 2008 में बैठे हुए थे. एंड आई आई एग्री एंड आई अप्रिशिएट
your concern and your caution. And obviously, being a trader, सर मेरे को मेरा व्यू तेजी का आज की डेट में है, और बीइंग अ ट्रेडर मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा पलटी करने को। तो मैं क्या आज बेसिस पे आके बोल रहा हूँ, मंडे को अगर बाजार नेगेटिव होगा मैं मंदी करेगा। आई मीन आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट मैरिड टू माई व्यू, आई एम मैरिड टू माई मनी एंड आई एम मैरिड टू द प्राइस। वेरी सिंपल। सो आई मीन ठीक है, आज की डेट में सिनेरियो लग रहा है, एंड द डायनामिक्स ऑफ द trade and the global world change pretty fast overnight. अगर कुछ इवेंट होता है तो मे बी you I can turn bearish as No, well. but Vishal, you being such a smart guy, why don't you understand there are mines everywhere in US, Japan, Europe? काहे को? Why take a chance when there are minefields everywhere? शिवाजी क्यों बनना है? सर चलिए सर, मैं आपसे I'll ask you a counter question. What if there is a minesweeper who comes and cleans all the mines, and suddenly we see No. everything. Yeah. I take your comment, but it is so devoid of fact that it does not merit an answer. जब चलिए फेड वाला ऐसा बोलता है कि नो लिमिट है मेरे पास में, तो सोचना कि क्या है भाई अपने को। चलिए, एनीवे, बहुत बहुत चलिए सर, क्या गुड कर लक सकते टू यू। हैं। राइट सर, थैंक यू एंड विश यू सेफ। नीलेश भाई। गुड इवनिंग शरद भाई, गुड इवनिंग सावत भाई। तो सर एक थोड़ा हाईलाइट दूंगा। जैसे आपने बोला कोल इंडिया एनटीपीसी सब हाई पे है, अग्री टू दैट। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट वुड बी ड्रास्टिकली अनाउंसिंग द क्यूआईपी एंड वो फ्लोटिंग सब ज्यादा हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक दैट दिस रैली एज पर स्पेसिफिकली कोल इंडिया पावर ग्रिड वो होगा, वो मुझे नीलेश भाई आपकी आवाज कम, आवाज क्लियर नहीं है नीलेश भाई। आई थिंक इफ यू आर यूजिंग हैंड्स फ्री तो हैंड्स फ्री निकाल दे। और नहीं आ रही है, मैं वापस रिबूट करके आता हूँ। हाँ जी, हाँ राजीव भाई। समझ भाई, 5 मिनट चालू रखना, मैं बाहर जाके आता हूँ। हाँ सर, राजीव भाई। Sadai, good evening. Sadai, good evening. गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। Well, Samad bhai, just wanted to share what happened in these days for the last 15 days with us. So we are talking about Adani Port, Samad bhai. जब ये 981 था, इस वसीम साहब and TV people, great people, breakout 4 figures में तो तब भी आ रहा था ये, and then it went to 791, I think so. Now it's 840. So what you people always suggest, be cautious. Short-term traders and those who are making money short-term, it's fine. But as an investor, even Adani Port itself proved that with high valuation. Right now, what is Adani Port, you all know, and now still people are saying 4 figure and all, it's fine. But see the fall. And Sharad bhai is saying correct thing, if Nifty is all-time high, Sharad bhai, you support this statement if I'm right or wrong. Then where are the stocks? Which stock is 52-week high? Everything is manipulated. तो समझ भाई आप इस पे थोड़ा सा बताएं, फिर आगे डिस्कशन करना चाहता हूं मैं। नहीं, ओनली एसबीआई इज इन ब्रेकआउट स्टेज, बट वो मंडे को ही पता चलेगा कि एसबीआई ब्रेकआउट में है कि क्या है। उनका चलिए अब रिजल्ट भी कल है। चलिए ब्रेकआउट पे आते हैं। एनएमडीसी 135 ब्रेकआउट, द होल वर्ल्ड वाज चिल्लाइंग, द होल वर्ल्ड एनएमडीसी। लुक एट बट एनएमडीसी राजीव भाई द फंड इज इन कैश स्टॉक्स। मैंने 250 में वर्कआउट लोग लिया है, बराबर है। या मैंने 40 रुपए में लेमन ट्री लिया है, या बराबर है। तो दैट इज देयर, यानी फंड इज इन कैश स्टॉक्स रेदर देन फ्यूचर स्टॉक्स फॉर मी। और आपने मस्टॉक दो बहुत कमेंट भी किया था, आपने मुझे बताया भी था, सबको भी बताया था शायद। नो, माय पॉइंट इज दिस ब्रेकआउट स्टोरी इज नॉट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट बिकॉज निफ्टी इज कंप्लीटली मैनिपुलेटेड ना।
See, though I am not against bulls and bears and all, but bull is saying कि 18,000 nifty आ गया, 18,200 nifty आ गया. What does it matter? When Sharad Bhai says कि whose portfolio is in green, show it to me. It's a valid point. So playing on Nifty and the Nifty all-time high with Mr. Anil Singhvi and G Cinema and all traders is a stupidity, is a childish nature. I think so. This is my view. This is my view. If नहीं you, नहीं राजीव भाई, एवरी चैनल ये जो स्पीकर्स है वो पेड स्पीकर्स है, उनको सैलरी दी जाती है. जो ट्रेडर है 100%. विशाल भाई जैसे, शरद सर जैसे, मैं कभी ट्रेड करता हूँ, बराबर है, आई हाँ, डू ट्रेड. yeah, आप हो तो जो ट्रेड करते हैं वो कमाते हैं, बस वही काम का है. अदर अदर yeah, थिंग्स आर टू बी साइड ट्रैक्ड. जो yeah. पैसा You are right. कमाने की चीज है बस उसके ऊपर ही ध्यान रखना है. ठीक है. अब आप देखिए कि मैं आपके यहाँ स्पेस में बोलना चाह रहा हूँ, जितना भी मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेट करता हूँ, एंड आई एम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर ऑल्सो. एक चीज है जिसे हम बोलते हैं नो क्लैरिटी विद पर्पस. व्हेन यू डू नॉट हैव पर्पस, व्हेन यू आर नॉट क्लियर विद पर्पस, यू डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी. अब इसको हम रिलेट करते हैं एजुकेशन और स्टॉक मार्केट से. पहला एग्जांपल मैं देता हूं आपको बायजू का. आज हमें पता है कि बायजू का लॉस हो गया, फेल हो गया. जिस दिन बायजू फर्स्ट डे आया था, आई टोल्ड माय ब्रदर राजी अजय, इसका पर्पस नहीं है, बिकॉज वी आर हार्डकोर टीचर्स. समझ भाई, I teach 30 to 35 students in a year, only 30, 25, 35 students in a year, Samarth bhai, and my bread and butter. I teach 8 hours. And you name Rajiv Soni in Delhi in a best school in Vasant Valley, modern school, or any school, people, principals, they all know me because I give merit from my institute. Why I tell you? I teach 20. राजीव भाई Yeah, वो yeah, Sharad bhai. वो सब बराबर है, पर जब मैंने आपको फोन किया, Yeah, Sharad bhai. नहीं, फिर यू डिड नॉट हैव द डिसेंसी टू कॉल बैक. No, I told you I have to talk to a few people, then I'll get back to you because they are supposed to come in the नो first बट week of नो December. नो ओके नो नो ओके Yeah, एनीवे yeah, Sharad bhai. I told you first week of December we'll finalize everything, na? Yeah, I'm audible, Sound bhai. Yes, yes, Rajiv bhai, you can go ahead. So no clarity with purpose. So in education in Baiju, he didn't have any purpose. Just always wanted to mean no clarity in picture. Same in education, when we spend like 15 to 20 lakh rupees for a child from class nursery to 18, they cannot write even one essay properly. And similarly in stock market, there is no clarity. All manipulated nifty and all valuations are so high कि आपको कोई clarity ही नहीं पता. And Sharad bhai and all you people, actually not bears according to me, actually are bull people, because when stock will come down, you will be the first to buy. You need a courage, you need a lot of courage when stocks goes down and then you buy at the right time. So this bill bear कहानी से भी आपने मुझे बहुत बचाया and I'm very happy. And the best part which you have helped me again, that I'm completely focused on few stocks and then it is actually helping a lot. And then when I surveyed my friends and all about stocks and all, then I found ki about 150 people when I surveyed are making a documentary. They are not trading even like for 10 to 20 lakh rupees. So all small players, it's very difficult in the market. So this also I have noticed. And Charlie Munger recently said that in America the biggest problem is coming, the people are becoming fat. And then I studied a lot ki printing more money will cause a great problem for America, and this time would be a huge cost they have to pay. And that we have been observing for the last few months. What about Nasdaq stocks and Dow Jones and all? So according to Munger, this problem is not going to solve this time so easily because of वापस टेक्निकल कनेक्शन. हाँ नीलेश भाई, आप बोलिए अभी तक, जब तक राजीव भाई आते हैं. हाँ तो सर, वो पीएसयू की जब बात हो रही थी ना, फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ गया है मेरे हिसाब से, तो एनी टाइम आई थिंक post elections we will see series of QIPs being announced, right, maybe from Coal India to NTPC to Power Grid, के गवर्नमेंट को पैसे का जरूरत है. और अगर गवर्नमेंट शेयर्स बेच के अगर पैसा वो क्यूआईपी नहीं करेगा तो पैसा बैलेंस कहाँ से करेगा. तो वो आई थिंक वो जो पीएसयू निफ्टी में है वो तो सब स्टोरी सर फिजल आउट हो जाएगी. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन.
बट नीलेश भाई, बीपीसीएल एचपीसीएल को किसी को तो बेचने के लिए रखा था, बट अभी तक कोई बोली नहीं लगाई किसी को। नहीं वो ठीक है, बीपीसीएल एचपीसीएल छोड़ दो ना, लेकिन जो ऊपर है अभी कोल इंडिया, तो वो गवर्नमेंट अभी तो बेचेगा ना। अभी नहीं बेचेगा तो कब बेचेगा? वो क्या फोटो फ्रेम थोड़ी बनाने का है गवर्नमेंट को भी। बट बड़ी कंपनीज ईएसजी कंसर्न की वजह से कोल इंडिया में स्टेक नहीं लेगी, ईएसजी कंसर्न होगा वहां पर एफआईएस को। आई डोंट नो, क्यूआईपी करके वो करते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड ईएसजी लेंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से कोल इंडिया में। अच्छा, बट एनटीपीसी वगैरह उसमें तो कर सकते हैं ना, पावर हाँ, ग्रिड उसमें कर एनटीपीसी। सकते हो। हाँ तो एनटीपीसी का भी पता नहीं है, पावर ग्रिड यस। NTPC, if I remember properly, last UAP was at 146. That was way back in, I think, 2011-12 or something like that. उसके बाद ये भाव आया है। वापस QIP करेगी, वो सेल ऊपर गया क्योंकि था जस्ट तभी टू वापस जस्ट टू मैंने किया था। जस्ट टू तो इंटरप्ट नीलेश में, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद इन नेदरलैंड फर्म। तो हाँ वहां पर वही होता था कि ईएसजी की वजह से दे वर नॉट फंडिंग एंड दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू शिप ब्रेकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, तो दैट वाज द थिंग। या और जो अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, मोमेंटम नहीं है। 40-50 पॉइंट बढ़ने को निफ्टी में खुलने के बाद नाक में दम आ जाता है, वेरी ऑनेस्ट। तो ठीक है, अभी ये ऊपर नीचे हो रहा है, बट आई एम पर्सनली नॉट कन्विंस विद द रैली। एंड देखते हैं अभी कब फिजल्ड आउट होता है, कैसे होता है। आई एम पर्सनली नॉट कन्विंस एट ऑल विद दिस रैली। थैंक यू। Yeah, I have sent a request to Saurav Joshi and Ravindra Bhandari ji. Yeah, Ankit bhai. Yes, Ravindra ji. Good evening. गुड इवनिंग सर। एक ये पावर ग्रिड और एनटीपीसी की ओएफएस और की जो बात हो रही थी ना, जस्ट एक डेटा पॉइंट, उनका स्टेक गवर्नमेंट का ऑलरेडी 51% है। तो गवर्नमेंट का मैंडेट टू रिमेन इन सीपीएसई इंडेक्सेस के 51% के ऊपर रखना पड़ेगा। तो पावर ग्रिड और एंड एनटीपीसी मोस्ट लाइकली विल नॉट बी पार्ट ऑफ ओएफएस। जनरली ओएफएस ही प्लान करते हैं जहाँ पे कंपनी में गवर्नमेंट को या कंपनी को पैसा नहीं चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट ही स्टेक बेचती है, तो वहाँ पे ओएफएस होता है। पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी आर स्टैंडिंग एट 51%, अनलाइकली टू बी कैंडिडेट फॉर ओएफएस, क्योंकि फिर सीपीएसई के एंटिटी से भी निकालना पड़ेगा जो सीपीएसई के फंड्स है। तो बाकी में हो सकता है। ठीक है, बट यू एग्री ना कि कोल इंडिया में ईएसजी की कंसर्न की वजह से एफआईएस विल नॉट पार्टिसिपेट, इज दैट द वैलिड पॉइंट? सर एफआईए इज ऑलरेडी स्टेक ना, जैसे फ्री फ्लोट उनका कुछ 35% है, एफआईए का स्टेक ऑलरेडी 35 में से 5-6% ही है। तो एफआईए इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ वेरी बिग वे। जो भी एफआईए 6% के आसपास है ना, उसमें से काफी कुछ इंडेक्स वाले फंड होंगे। तो ऐसा कुछ ज्यादा उनका अभी भी नहीं है, एंड इट्स अ वैलिड कंसर्न। अनदर इफ आई मे पॉइंट आउट, कोल इंडिया में एक बड़ा कंसर्न ये भी आने वाला है कि इंडिया का कोल प्रोडक्शन इज अबाउट 900 मिलियन टन, और इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ होता है ना सर, वो एक्चुअली कैन रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो वो 5-6% के आसपास ही होता है, तो कोल का भी अपना कंजम्पशन 5-6% के आसपास होगा। Now think about this, that private coal mines produced about 85 million ton last year out of some 900 million ton of pan India. 900 शायद कंजम्पशन था या प्रोडक्शन था, मेरे को याद नहीं है, बट 85 वाज प्राइवेट। इस साल अपना पावर मिनिस्टर का कमेंट है कि 130-135 विल बी द प्रोडक्शन। एंड अनदर रिफॉर्म विच विल कम इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग विंटर सेशन इज, पहले जो भी प्राइवेट माइनर्स को कोल माइंस ऑक्शन होते थे, द रूल वॉज, एक बार उनका जिस पर्पस के लिए कोल माइन दिए गए हैं, बीट सीमेंट पावर प्लांट या स्टील प्लांट के लिए, उसका यूज होने के बाद ही वो लिमिटेड क्वांटिटी ओपन मार्केट में बेच सकते थे। अब ये विंटर सेशन के बाद ऐसा कुछ रूल आएगा कि दे कैन इजिली एक्सेस ओपन मार्केट, so that will also put some pressure on the realization of coal India. Other thing is what I heard from the market last एक महीने में कोल इंडिया के जो ई ऑक्शन के प्राइसेस हैं, उसके प्रीमियम में काफी नीचे आया है। नंबर मेरे को नहीं पता, लेकिन कोई मीडिया सर्कुलेशन और आर्टिकल्स में था कि लास्ट मंथ में काफी नीचे आया।
So that might also play a role. ओके, और कुछ रविंद्र जी? नहीं सर, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया तो मेरे को पहले का डिस्कशन कुछ पता नहीं है। नहीं, तो बस वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द करंट मार्केट वैल्यूएशंस एंड द स्टॉक प्राइसेस एज सच एंड सर वीक। वैल्यूएशन तो एलिवेटेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब एलिवेटेड जो रहता है वो काफी टाइम तक रह सकता है, कोई टाइमलाइन नहीं डिसाइड कर सकते कब तक ऐसा रहेगा। वन विच अनदर पॉइंट कभी कभी सुनने में आ रहा है, वो ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया विल बी वन इन्वेस्टेबल मार्केट, क्योंकि चाइना से लोग पैसा निकाल रहे हैं, हांगकांग से जो पैसा निकाल रहे हैं। तो देखते हैं एफआईआई इंडिया में डालते हैं कि नहीं डालते। वैल्यूएशन तो सर एक्सट्रीम लेवल पे है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो रह भी सकता है, 6 महीने भी रह सकता है ऐसे कैसे, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। नहीं नहीं, वैल्यूएशंस कैन बी erratic एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एनी एनी टाइम फ्रेम, 6 months, 1 year, it can be like हाँ, this one. So अपने डिसाइड नहीं कर सकते कि कब करेक्ट होगा। yeah, correct. Yeah, शरद सर। 2 मिनट दो। हाँ सर। और आज नीलेश भाई, यूएसडी आईएनआर में क्या मूवमेंट था इतना डाउन साइड में? एनीथिंग इंटरवेंशन? आई डोंट थिंक सो। कुछ ऐसा था क्या नीलेश भाई? हेलो। तो यूएसडी आईएनआर के में ये हो सकता है कि जो पोस्ट मार्केट इन न्यूज आई ना, फॉर फॉरेक्स रिजर्व हैज गॉन अप बाय $5-6 billion इन 21st वाले वीक में, तो दैट कैन बी एन इम्पैक्ट, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। अच्छा, बिकॉज यूएस 10 year, सॉरी, इंडिया 10 year बॉन्ड वाज 7.48, तो वहां पर तो तो कुछ लेकिन चेंज नहीं हुआ ये था। क्या करता है ना, ये लोग लेते हैं एक हफ्ते के लैग से लेते हैं ना। तो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था ना यूएस का, वो कुछ 3.95 आया था, तो उससे थोड़ा बूस्ट आया होगा कि जो अपने फॉरेक्स में रिजर्व है यूएस ट्रेजरी वाले, उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के वीक में 3.95 3.4 के आसपास था, जो अभी 4.15 दिख रहा है, तो उसका कुछ बेनिफिट मिला होगा। बट क्लियर कट सर, ओवरऑल ट्रेंड तो नीचे गिरने की टाइप का ही है, कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर और मे बी जनवरी में भी अपने जो साइकोलॉजिकल लेवल है $500 billion फॉरेक्स का, वो भी टच कर सकता है। जस्ट बिकॉज और इट हैज इंक्रीज बाई 1% इन अ वीक टाइम, वो माइट हैव हेल्प इन आवर करेंसी। और रवि जी, yesterday there was a blip transaction of 5.13 यूएस 2 year बॉन्ड में 5.13 का एक ब्लिप ट्रांजैक्शन था। हाँ, वो ब्लिप यूएस वाले में था ना, हाँ, कुछ 2 years। हाफ आवर के लिए। हाँ। यस। तो इतना नहीं ट्रैक किया सर, आइडिया नहीं है। ये देखिए, अपने ये बात करते हैं कि अपना बाजार तेजी होएगा, मंदी होएगा, कुछ भी होएगा, बट कोई स्टॉक ऐसा जो प्रीवियस हाई बना था वो तो नहीं कूदा रहा है, तो मोमेंटम अभी खेलना चाहिए जिसको भी खेलना है। और अगर डाउ जोन्स 600 पॉइंट प्लस वाला, ने एसएनपी 80 पॉइंट प्लस था, नेगेटिव हो गया, तो अपने को नहीं लगता है कि वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम है। और अपने बोलते हैं कि अपने महान है, ये वो गिरते तो कपड़ा फाड़ के गिर जाते हैं। So it's just a bravado and nothing else. हाँ नहीं सर। तो समझ भाई, सॉरी, देर वॉज सम नेटवर्क इशू। हाँ व्हाट जी। आई कैन अंडरस्टैंड, एक दो फॉरेस्ट डीलर से बात हुई थी, वो उतना पता चला मुझे कि
सम एक्सपोर्टर रिलेटेड सेलिंग हैज कम, आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं दिखा है। एक्सपोर्टर में भी मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी जो रहेंगी उन्होंने ये कुछ सेलिंग किया होगा, वो ये मुझे समझ में आया है मेरे को, बट आई डोंट थिंक सो देर इज एनी आरबीआई इंटरवेंशन। नहीं, आरबीआई इंटरवेंशन तो नहीं था। हाँ, एक्सपोर्टर रिलेटेड सेलिंग था। और जनरली क्या होता है कि मंथली खत्म हो जाता है ना, मंथली जैसे इम्पोर्टर्स का बाइंग खत्म हो गया तो एग्जॉशन दिखा है हम लोग को, वो हिसाब से वो हुआ है। तो वापस नेक्स्ट मंथ में देखेंगे, मंथ मंथ क्लोज पे वो बाइंग आता है कि नहीं आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मंथ ऑन मंथ तो अभी ऊपर ही चल रहे हैं हम लोग, तो ये छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग होगा, दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ अभिषेक। सर there's just one chart I would like to share. ये अपने यूएस में एक कंपनी है called Carvana. It is the biggest second hand car retailer in USA. तो ये इसका चार्ट मैं जो शेयर करता हूँ, ये गया था पैंडेमिक के बाद 50 का गया था 380, और 380 वाला अब आ गया $9। तो अभी ये जो अपने अपने वाले बोलते हैं कि सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट था, ये था वो था, because of that the pricing of automobiles in the second hand market had gone up very high. तो यूएस में था, एंड देन नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड नॉट जस्ट विद योर ऑटोमोबाइल्स एंड also with housing also. जैसे कि मैंने थोड़े दोस्तों से बात किया जो यूएस में रहते हैं, दे वर्क फॉर अमेजोन, सिएटल, मतलब न्यूयॉर्क, दे स्टे इन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। तो दे वर टेलिंग मी कि जो तुम्हारे बिकॉज मॉर्टगेज रेट्स हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली ओवर देयर, तो जो प्राइम टाइम एरियाज है तुम्हारे, लेट्स से इन मैनहट्टन और लेट्स से कि अपना बॉस्टन में या एनीवेयर फॉर दैट मैटर, द प्राइसिंग हैज गॉन अप सो मच, रेंटल्स इटसेल्फ कि $2,500 का जो रेंटल भरते थे एक महीने का, वो हो गया है सीधा 3,900। ये अपना यूएस मार्केट इज वेरी गुड एट प्राइसिंग थिंग्स as of now, because I think that's a very broad market where the hedge funds can actually see कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर का क्या भाव होना चाहिए। Our market that does not do that very clearly. So these are a few points I wanted to add. And then हाँ, आज के दिन जो अभी ये pivot वाला हुआ कि everyone was expecting a pivot करके rally हो गया था। In fact, our markets are still not pricing in that. US markets I think 15% rally हो गया था नीचे से, Nasdaq about 10%, and almost 6-7% तो निकल गया 2 दिन में, as soon as the news came कि pivot नहीं होने वाला भाई। That's what I wanted to add. ओके, गुड पॉइंट। सर और तो कुछ नहीं है, और कोई सर अभी तो स्पीकर पे अनंत आचार्य है, बोलो अनंत भाई। बांग्लादेश वाले। बांग्लादेश। बांग्लादेश वाले, हाँ जी, बोलिए। बोलिए। अरे क्या बोले, स्ट्रेट जहां भी जाता हूँ पब्लिक यही बोलता है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। पर ये मार्केट 18,100 होल्ड नहीं कर पाता है, 18,100 200 जो भी ये रेंज है। लेट अस सी, बिकॉज एक एक तरफ से कंसेंसस है कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड मार्केट्स आर डिक्लाइनिंग, सो इंडिया शुड आल्सो डिक्लाइन। पहले मैं भी यही बोलता था, but since it has not been declining, my question is, does the market know something which we do not know? Fundamentally speaking, from all angles, this market should have declined quite a bit by now. हो नहीं रहा है. So, two questions. From a pattern basis, it looks like it is a declining triangle distribution and everything. I was expecting the market to decline at least today. Even today did not happen. So max, I'm giving it one more day of Monday. अगर मंडे भी डिक्लाइन नहीं दिखता है और ऊपर जाना चालू करेगा 18,200 18,400 के ऊपर, ये 300 पॉइंट तो एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे कोई व्यू रखना ही गलत है।
because anything can happen in this 300-400 points. And just because mathematically एक point के ऊपर आते ही people will talk about a breakout and नया high and all फिर से सुनने में मिलेगा. But truly speaking, from 1800, 18,100 to 18,400, 500, there is ample chance for the market to decline. But coming back to the question, if we see a decline here, a lot of people are expecting a complete collapse. Shayad it may take a longer time for that to unfold, or it can just correct a little, again, correct maybe 20-25% like how the Dow has done, and we may see a rally. But truly speaking, at this point in time, कोई clarity नहीं है, zero. I am staying away from market and only trading on a very, very short term basis, almost scalping. And that too, I'm staying away from both Nifty and Bank Nifty, and I've shifted to stocks. Let's see what will come in later. But very, very funny market, very, very strange market India is working on. Even after the last 2 days, since the Fed raised the prices, and they have also said that they will not even consider changing the rate in December. इतना सब बोलने के बाद भी the rupee is still holding strong in spite of the interest rate, but there's not any increase in the interest rates in India. Strange, very strange. After the RBI, what do you call, statement and whatever has happened, I would give it 48 hours. देखते हैं Monday or Tuesday if the rupee will again stage a breakout and start trading about 83.50. Once it hits 83.50, it's a difficult scenario for equity. But again, having said that, if I had said, I have told any fund manager, any analyst, anyone in India in January 2022, when rupee was trading at 75, that by December ये 83 हो जाएगा, तो वो बोले क्या बात कर रहे हो, तब तो निफ्टी तो 10,000 के नीचे आ जाना चाहिए. But strangely, रुपी आ गया है 83 के आसपास, एंड मार्केट तो कहीं हिलने का बात ही नहीं करता है. So something strange is very strange is cooking. Either a complete collapse or a complete breakout. The complete breakout seems very dicey because a lot of things are not playing in for such a view. And just looking at the Nifty number, we should not start picking it, but the larger pattern is very, very, very dicey. So we could have, like I said before also, we could have like something like a 2004 collapse when Nifty went on from 2,400 all the way down. It collapsed almost 20% in just a matter of 3 days. Something like that is very much possible. Very much. I expected Nifty to be much lower by end of October. What happened? Very strange. Everything that we see is unfolding exactly. Even on the Dow today, there was a rally which was a perfect ABC pattern, and post the ABC pattern, expect the Dow to continue down. I don't know what it is doing. It was, so last time was I checked, it was trading about 500 points higher. So I guess either today or on Monday or Tuesday, this rally which is looking on the Dow will start completely giving up, and we will start testing the lows again. So the Dow may go back and test 20, 32,000, 31,000, and even it has to actually test 26,000. Before that, I don't see a rally in the Dow. The US markets, the world markets are behaving as expected with the pattern, and Nifty is the only joker in the whole pack, which is not doing anything that is expected. There's something strange which is going on in the Nifty. So, ideal, my view, my decision was to just stay away from here till this insanity goes and sanity prevails. Anand, the US markets are down. Already,
Let me just check. Oh la la. Okay. अरे तेरे चेक करने से क्या होगा, मैं बोलता हूँ ना अरे तेरे आपने को। बोला मालिक पैटर्न तो देख लूं मैं. Oh la la. Oh lovely. Okay. 30 to 500 करेक्ट परफेक्ट. उस दिन का प्री अनाउंसमेंट जो ब्रेकआउट लिया था वो ब्रेकआउट लवली. प्री अनाउंसमेंट ब्रेकआउट जो लिया था वो लेवल टेस्ट करके आया. इट इज डन परफेक्टली एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड. टेक्निकली जो ब्रेकडाउन लेवल था वो देयर वर थ्री बॉटम्स ऑन आवरली चार्ट. वो ट्रिपल बॉटम का जो तोड़ के डबलिंग किया था. इट हैज जस्ट टेस्टेड दैट एंड इट इज ब्रेकिंग डाउन. या परफेक्ट. We should start looking at much deeper levels. 26,000 लग सकता है on the Dow, which is what is my ideal count. And I think henceforth on all spaces we should not discuss Indian markets. We should only discuss foreign markets. It is They behave properly, बराबर nicely, बराबर बराबर है. I agree. and not like here. I agree with you 100%. I was talking to some of my clients in the US and Germany. They're saying, dude, how are you able to forecast our markets without even getting the news from here? Because I don't know when their results are and all of that. And their markets are behaving perfectly fine. And India, यहाँ बैठ के ज्यादा न्यूज है. Maybe the extra news is also making me biased. I don't know. Strange है India. बहुत strange है. Last 3-4 months it has become very strange. Amazon.com is at 52-week low. Microsoft is at 52-week low. चलो चलो चलो. यार 20 एक ट्रिलियन डॉलर है वर्ल्ड मार्केट में. 20 ट्रिलियन डॉलर का बैलेंस. आनंद भाई, हाँ आनंद भाई, ये पागल लोग को मैं सजेशन देता हूँ. बोलो. एप्पल अमेजोन वाले को, ये पागलों की उधर लिस्टिंग रखा है, इंडिया में लाओ. हाँ बराबर. डबल टिबल तो ऐसे ही कर देंगे. हाँ, अरे ये क्या क्या तुम नॉनसेंस करता है. अरे सर $2,000 का अच्छा अरे बड़ा, का है. nobody will buy in India. नहीं नहीं, अरे बट हियर ऑल्सो पीपल आर नॉट बाइंग. ओके, हाँ हाँ अपन भाव बना देता है ना, बराबर बराबर है. करेक्ट. लास्ट 20 मिनट में आके भाव बना देता है ना. Because Indian markets are hugely skewed in the by volume in favor of option selling and option writing. स्पेशली इन दी लास्ट 2 साल में ये ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन राइटिंग का भूत चढ़ा है इधर. आई थिंक 3 साल हो गए अभी जो तो ऑप्शन राइटिंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन राइटिंग करने का बहुत. एक ही झटके में जब पब्लिक का पैसा नहीं लेकर जाएगा तब तक सुधरेंगे नहीं, सब तक सीखेंगे नहीं. एंड ये तो आपने देखा है ना शरद भाई. 94, 2000, 2008. I have seen so many times. So I am not surprised. It's the same stupidity and the same madness which is going on. In fact, हर्षद के टाइम पे इससे ज्यादा था. अभी तो कम है. बराबर है. चलिए, तो सब लोग उछल रहे, कूद रहे हैं. Yes, sir. बोलिए. बस सर, we can wind या up. या ओके. अभिषेक का क्वेश्चन है. या अभिषेक, अबाउट दिस ऑप्शन राइटिंग जो अनंत भाई बोल रहे थे, अभी तो 17,000 पे 17,750 वाला पुट किसी ने बेचा था 650 रुपए में. मतलब हाउ कैन यू डू दैट जब इंडेक्स वहां पे दिख रहा है 17,000 पे और तुम पुट लिख रहे हो डीप इन द मनी. हु आर दिस पीपल? एरोगेंट पीपल.
एब्सोल्युटली। ऐसा ही है, ठीक है यार। अभी इतना बड़ा ऑप्शन राइटिंग का धंधा है, आप क्या करोगे? एंड वन थिंग अभिषेक, आई लाइक टू टेल यू, प्लीज एक्सेप्ट whatever it is, accept it and mold yourself accordingly. Don't say ये गलत है, अपने को भी मालूम है ये गलत है, but it is, we can't help it, we can't do anything about it. So just observe and if possible play with them. What's wrong यार? तो समझ भाई अलविदा कहते हाँ, हैं। अपॉर्चुनिटीज ट्रेडर चैंडी जी। थैंक यू समर भाई, थैंक यू शरद सर, गुड इवनिंग। महादेव। बहुत अच्छा स्पेस था सर, मैं पिछले 1 घंटे सुन रहा था, काफ़ी अच्छी चीज़ सुनने को मिली और काफ़ी सुनने चीज़ें अच्छी नहीं थी वो भी सुनने को मिली। सर आपका स्पेस में ना नॉलेज तो बहुत सारी मिलती है, बट साथ साथ में ना कुछ चीज़ें वो भी आती है जो मतलब मार्केट के लिए अनरियलिस्टिक होती हैं। ये कुछ लोग बोल रहे थे अभी पता नहीं क्या क्या, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप इस भाव पे ना, क्योंकि सर आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आपके ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, तो इंडेक्स के लेवल्स जो हम लोग बात करते हैं, देखो मार्केट में कुछ भी फंडामेंटल अच्छा नहीं है, ये आपको सर, आप सीनियर हैं, आपको सबसे ज्यादा पता है। हम लोग भी फॉलो करते हैं कि हाँ कुछ फंडामेंटल अच्छा नहीं, बट मार्केट जब चल रहा है, जब तक ऊपर, तब तक तो चलने दीजिए ना। जब जब सेलिंग आएगी तो ठोक के, आपका आशीर्वाद से ठोक ठोक के बेचेंगे, खूब पैसा बनाएंगे। तो मार्केट जैसे आप अभी लास्ट टाइम आपके नहीं जी नहीं, जी ये मैं बोलता हूँ कि माय व्यू इज वेरी शेव, but I don't say कि you sell. No, I myself, I bought how many RVML today? 10 लाख ले लिया होगा, 2 रुपया ऊपर बेच दिया, चलो। तो लेके ही मैं धंधा करता हूँ पे समझ में आता है। ये सब बोलने का बात है कि ध्यान खराब है, टेक महिंद्रा में है, ऐसा बट सर 3-4 में सौदा रहता है, मेरा निफ्टी में तो जीरो। हाँ सर, वो तो मुझे पता है ना कि आप निफ्टी ट्रेड नहीं करते, बट जो यहाँ पे आपके स्पेस में जो देखो सर, आप इतने ऑनरेबल पर्सन है कि आपके स्पेस में जो स्पीकर बन के आता है और वो अपना व्यू बोलता है, तो पब्लिक, अभी 800 लोग सुन रहे हैं सर यहाँ पे, एक एक बात बोली हुई वो लोग पत्थर की लकीर मान के उसको फॉलो करेंगे। अभी मान लो सपोज मैं बोल के गया हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, और बाजार के सामने मैं बहुत छोटा सा ट्रेडर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ बोल के जाऊँ कि मैं अपना पूरा माल ठोक के आया हूँ, तो कल बेचारे कुछ 2 4 5 10 लोग तो कम से कम मैं सुनकर बेच ही देंगे, और शायद पता नहीं क्या होगा उनके साथ। तो मेरा बस ये नहीं, कंसर्न है। चंदन भाई, आपका कंसर्न बराबर है, बट I think and I come from an area where I don't care for others. मैं जो बिल्कुल बराबर बोलता सर, बिल्कुल बराबर सर, मैं जो बिल्कुल सर। बोलता हूँ, आप भी अपना दिमाग लगाओ ना भाई। सर ये आप समझते हैं, आप जानते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं सर, अगर दिमाग लगा रहे होते तो सारे सारे आपकी तरह सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना सर। नहीं नहीं, वैसा नहीं है भाई, जनरल बात करो। और मैं क्या बोलता हूँ चंदन भाई, छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है, किसी ने बेच दिया ले लिया, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं खाली नॉलेज देता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो कीजिए, और वरना वो छोड़ दीजिए ना। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो मिलने वाला नहीं है। मैं बोलूं बेच दो इंडिगो, आपने बेच दिया, वो तुरंत नहीं घटेगा, लगता है हफ्ते के बाद घटेगा, 1 महीने के बाद घटे। सो वॉट एवर आई से इट सर इज आपके ट्रेड्स, सर आपके ट्रेड्स तो ऐसे होते हैं कि आपने बोला कि ये बेचो, और चाहे वो दोस्त आपका, तो देखो बाकी लोगों को बता दूं मैं, उनको नहीं पता, शरद सर जब बेचते हैं तो ये बेच के ना अपना माल 3 3 साल तक बेच के पोजीशन में रहते हैं। यहाँ पे 800 लोग हैं, 800 में से 8 लोग भी नहीं है जो अपना माल बेच के 6 में तक खड़े हो रह सकते हैं। तो बेचने वालों की एक अलग कैटेगरी होती है, एक अलग पावर होती है, एक अलग सोच होती है। उनको पता है कि ये माल जाने वाला है, तो उनके लिए अच्छा भाव, ऊपर ऊपर का भाव बेचने का होता है। बट ये फर्क क्या है कि आप अगर आप
को क्लियर करते हैं कि देखो क्या है, क्या करना है, बट साथ में और भी स्पीकर्स होते हैं जो बोलते हैं कि बेचो, अभी सर्किट लग जाएगा, अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, उसमें तो पब्लिक बेचारी मर जाती है सर। क्या बोलेंगे लोगों को सर? आपके सर, आपका आपका वे ऑफ टॉकिंग भी आप Chandan, जो I have a different opinion. If you are going to pay me, then I am responsible for what I talk. You are not paying me. You are just listening to me as an entertainment. So why in the hell should I be responsible? You get my point. जी सर, और बट ये मेरे लिए तो ये सर आप नहीं नॉलेज मैं का क्या बोल भंडार है सर ना, नहीं शायद मैं बाकी लोगों के लिए भी होंगे। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, चंदन भाई छोड़िए ना, जिसको जो करने का है वो करे। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, एक्सेप्ट 4-5 जन का, बस। दैट इज परफेक्ट सर, बिकॉज सर इतना नॉलेज, इतना चीजें काय को किसी को देने जाएगा, ज्ञान बांटेगा फ्री में। आई एग्री, टोटली एग्री सर। और बट बाद सर में वो क्या बोलेगा, बेवड़ा है, कुछ नहीं सर, बेवड़ा है, आप क्या फूकता है, चूतिया सर है। जो ऐसा बोलता है ना, उनको सोचना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो। शरद शाह इज नॉट अ नेम, इज हिमसेल्फ इज अ ब्रांड। नहीं तो नहीं जिन लोगों को छोड़िएगा, पता नहीं चलिए है उनको पता चंदन होना भाई चाहिए कि शरद शाह नहीं नहीं कौन है। चंदन भाई आप अपना ओपिनियन दीजिए ना, चलिए। मेरा सर देखो, मार्केट के लिए मेरा व्यू जो है अभी भी न्यूट्रल है। हम्म। जैसा लास्ट टाइम था, मेरा मेरा पोजीशन डेल्टा न्यूट्रल रहता है, आज भी मैं कैरी कर रहा हूँ, डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन है। मैं यहाँ पे मार्केट में अभी भी कंफ्यूज हूँ। मेरे लिए 18,220 के ऊपर की क्लोजिंग आने पे, स्पॉट लेवल पे मैं माइल्डली बुलिश होऊंगा। 18,350 के ऊपर जाने पे मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगा। 17,900 तक का लेवल है जहां पे मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि उसके बाद अपने आप को रोक रहा हूँ। 17,900 के बाद मैं बेरिश हो जाऊंगा, और मैं बेरिश बनता रहूंगा। 17,500 के बाद मैं बहुत ज्यादा बेरिश हो जाऊंगा। बैंक निफ्टी में 40,800 जब तक नहीं टूटता तब तक मैं बेरिश नहीं हूँ। 41,550 स्पॉट लेवल के ऊपर मैं माइंडली बुलिश होऊंगा। 41,850 के ऊपर मैं एग्रेसिव बुलिश हो जाऊंगा। 40,800 के बाद मैं माइंडली बेरिश होऊंगा, और 40,300 के बाद मैं एग्रेसिव बेरिश हो जाऊंगा। ये इंडेक्स के लेवल हो गए सर। मैं एक सेक्टर पे ज्यादा बेरिश हूँ यहाँ पे। एफएमसीजी मुझे अभी अच्छा नहीं लगता। सारे स्टॉक्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। मेरे प्रेफर्ड पिक में हिंदुस्तान लीवर और टाटा कंज्यूमर, टाटा ग्लोबल जो है ये है। टाटा ग्लोबल या टाटा कंज्यूमर जो अभी नया नाम है, 760 के नीचे क्लोजिंग अगर आती है तो आई विल बी हाईली एग्रेसिव बेरिश इन दैट काउंटर। लीवर 2000 के नीचे मैं काफी बेरिश हो जाऊंगा। एम्फेसिस 1980 की क्लोजिंग आ रही है लगातार दो दिन से। मैं इसके नीचे काफी इस काउंटर में मुझे 300 से कम से कम 300 से 500 तक की मंदी दिखाई देती है। ये काउंटर है जिसमें बेरिश हूँ। टेक महिंद्रा 1040 के नीचे मैं बेरिश रहूंगा। ये लेवल्स का वेट कर रहा हूँ सर, लेवल्स आने दीजिए। इसकी ये आने के बाद मैं काफी मंदे, और मतलब लिस्ट तैयार है सर। मार्केट सिग्नल दिया और बेचने का काम चालू। लेने के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ जब तक वो अच्छा लेवल। स्टेट बैंक 605 के ऊपर मैं तेजी की बात करूंगा, नहीं तो 605 के जितने पास जाएगा उतने पास बेचने की बात करूंगा। तो ट्रेड प्लान तैयार है। पोजीशन अभी बाजार में कुछ नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। 1-2 दिन हो जाए, बाजार में पोजीशन क्लियर हो जाए तो ट्रेड डालूंगा। ट्रेड डालूंगा सर, तो आपके स्पेस कभी रहेगा तो मैं आऊंगा, अपनी ट्रेड पोजीशन में शेयर करूंगा सर। आई थिंक परफेक्ट। सर मेरा ट्रेड प्लान अच्छा लगा होगा आपको सर, और बाकी लोगों को भी समझ में आएगा सर। नहीं देखिए, आपका व्यू गलत है या सही है, ओके, बट आपके मन में क्लैरिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मन में क्लैरिटी होना, ज्यादातर लोगों के मन में कुछ क्लैरिटी रहता ही नहीं है, ले बेचू, ये करूँ वो करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, make up your mind, like Chandan, what he wants to do in case something what he is expecting happens. This is the perfect way to trade, and there is no other way to trade. And चंदन में एक बात पूछनी थी जी सर, सर बोलिए ना प्लीज। कि ये आपका ध्यान, आप तो चार्ट पे खेलते हो, वो सब बराबर है, बट ये वर्ल्ड मार्केट को देख के डर नहीं लगता आपको? मुझे
मैं दो चीज वर्ल्ड मार्केट में, मैं वर्ल्ड मार्केट नहीं देखता सर। मैं एक तो मैं ट्रैक करता हूँ क्लोजली DXY इंडेक्स, और दूसरा मैं बॉन्ड यील्ड्स ट्रैक करता हूँ। बॉन्ड यील्ड्स देख के बहुत डर लगता है। DXY द मोमेंट इट ब्रेक्स 114 रुपये 80 पैसा एंड क्लोजेज एवर बिट, सर मैं सब कुछ बेचूंगा, और मैं अपना छोड़ो, मैं बाकी जो मेरे साथ के लोग हैं उनका भी पासवर्ड लेकर उनका माल बेच दूंगा सर। मैं वेट कर रहा हूँ बस वो ब्रेकआउट दिख जाए मुझे होता होता हुआ। उसके बाद तो सर फिर वो रूप आता है अपना बेचने वाला ना सर। वो अभी तक उस एग्रेशन में मौका मिला नहीं बेचने के लिए कुछ टाइम से। 2020 में पहली बार मिला था, लास्ट टाइम मिला था। उसके बाद वो मौका वेट कर रहा हूँ, वो मौका मिले। बट मैं, क्योंकि देखो सर मैं एक बेयर ट्रेडर हूँ, मुझे मंदी पसंद है, बट मुझे तेजी से परहेज नहीं है। मंदी के लिए एक मेरा मेरा ये मानना है, जो ट्रेडर मंदी के पैसा बनाता है ना, वो बहुत स्मार्ट होता है। उसको पता होता है कि कब बेचना है और कहाँ निकलना है। एग्जिट प्लान पहले बनता है। अभी मेरे पास एग्जिट प्लान नहीं आ रहा शॉर्ट के लिए। जिस दिन मैं शॉर्ट का एग्जिट प्लान तैयार हो जाएगा ना, उस दिन मैं शॉर्ट चालू कर दूंगा। तो ये दो दो इंडेक्स, जो लोग यहाँ स्पेस पे सुन रहे हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे जो फॉलो कर रहे हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं, आप दो चीजों को ट्रैक करिए क्लोजली। यूएस बॉन्ड यील्ड्स बहुत गलत जगह पे खड़े हैं यहाँ पे, इसका इसका अंत बहुत खराब होता है। और दूसरा DXY अभी वो कंफर्टेबल जोन पे है। एक बार DXY ने 114.80 का लेवल निकाले, क्लोज दे दिया, तो फिर आप इंस्ट्रूमेंट मत देखना, आप इक्विटी कमोडिटी करेंसी भाव मत देखना, जो मिले वो ठोक देना, सब में पैसा बनेगा। और इतना बनेगा लाइफ का, मतलब अगर ये यहाँ से मंदी आई ना सर, जहां से भी मंदी आएगी, अभी आए 10 दिन में आए, 2 दिन में आए, पता नहीं कब आएगी। अगर जब ये मंदी ऐसी आती है ना, लाइफ का सबसे बड़ा पैसा बंदी बनता है। मैंने सर 18-19 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। लाइफ में 2 बार सबसे बड़े पैसे बनाए, दोनों बार मंदी बनाए। लाइफ में 2 बार नुकसान किया, दोनों बार वो तेजी मेरे से ऐसे भाव पे तेजी करी थी जैसे आज आज का भाव है, और सब कुछ खो दिया था अपना। तो इंतजार करता हूँ अब मैं समझदार हो गया हूँ इतना पिटने के बाद बाजार से, कि ऐसे भाव पे तेजी नहीं करता, और मंदी के लिए वेट करता हूँ। 200 पॉइंट मंदा बेच लेना। अगर 2000 पॉइंट की मंदी होने वाली है ना, तो 200 पॉइंट मंदा बेच लेंगे, पड़ेगा। अगर तेजी होने वाली है 500 पॉइंट की, 2000 पॉइंट की, 5000 पॉइंट की, तो 500 पॉइंट तेज खरीद लेना भाई, क्या फर्क पड़ने वाला है। कम से कम इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है, अगर मैं गलत डायरेक्शन में बैठ गया, तो सही डायरेक्शन का तेज जो ट्रेड है ना, वो मैं अपने कैपेसिटी पे नहीं कर पाऊंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ से तेजी कर दी और बाजार में रिवर्सल आ गया, मंदी आ गई, मेरा तेजी का स्टॉप ट्रिगर हो गया, तो मंदी में अपने फुल क्वांटम से नहीं कर पाऊंगा, मंदी में करूंगा अपने आधे क्वांटम से या 25% क्वांटम से। और अगर मैंने ये अपने आप को यहाँ बचा लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, और डायरेक्शन तेजी की आ गई, मंदी की आ गई, 200 पॉइंट मैंने छोड़ दिए, तो मैं एक भूखे भेड़िए की तरह बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। जैसा ही ट्रेड बनेगा, मैं पूरी ताकत से ट्रेड पे चढ़ूंगा, और वो ट्रेड मुझे लाइफ का बड़ा पैसा मिलता है ना, वो ऐसे ट्रेड में मिलता है। यहाँ पे जहाँ पे बाजार खड़े हैं, यहाँ से तेजी भी होगी सर तो बहुत बड़ी तेजी होगी, मंदी होगी तो भी बहुत बड़ी मंदी होगी। यहाँ से तेजी होने लगे तो निफ्टी 22,000 हो जाए, 21,000 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है सर, वो 6 महीने में हो जाएगी। और मंदी होगी तो यहाँ से आप जो बोलते हो भाव, अगर वो 14,500 और 12,000 भी आ जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। जो भी होना है बहुत बड़ा होना है यहाँ से, तो अपने आप चंदन, को बचा के रखिए सर। जी सर। फिर क्यों ही बोल रहे हो भाई, जो हम सबने बोला है। बिकॉज ये क्वेश्चन तो आपने अच्छा पूछा था। वाई आप लोग इतना तेजी बात करते हो, मंदी बात करते हो, इधर मंदी बोलते हो, लोग ये करता है। अल्टीमेटली आफ्टर एवरीथिंग सेड एंड डन, आप भी वही कर रहे हो ना बॉस। बिकॉज आप बोल रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली जो सिचुएशन में आप खड़े हो, उसी सिचुएशन में सारे एनालिस्ट खड़े हैं आज के दिन में, स्पेशली विथ इंडिया। बिकॉज यहाँ पे कोई भी कॉल देना इम्पॉसिबल है। तेजी बोल रहा है तो ही इज एक्चुअली पुटिंग हिज नेक ऑन द लाइन, एंड अगर गलत हो गया तो वो कटेगा, अगर मंदी बोला तो गलत हो गया तो वो कटेगा। दोनों एंड पे इस सिचुएशन में दोनों बोलना मुश्किल है। तो जी आनंद जी, आई आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आप बोले। बट इसमें एक चीज मैं करता हूँ, मैं अगर बाजार ऐसी सिचुएशन में होता है ना, तो मैं अपना व्यू या अपने ट्रेड प्लान बताता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं इस भाव पे मैंने अभी एक बार भी बस नहीं बोला कि हैंग ऑन मेरी हैंग पोजीशन ऑन तेजी की हैंग है ऑन। मंदी की है। ट्रेडर अगर आपको कोई, अगर क्योंकि यहाँ पे हम लोग, सर देखो, आपका एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस, हम लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, हमने बहुत कुछ देखा है।
तो लोग जो नए ट्रेडर्स आए हैं 2 साल 5 साल पुराने वो लोग उनको वो यहाँ पे रात को 11 बजे वीकेंड पे अपना टाइम इसलिए खराब कर रहे हैं कि उनको कुछ ज्ञान मिले, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, उनको समझ में आए। hang on. आप बोल रहे थे, हम चुप बैठे थे. Now please let somebody else talk. Don't do this continuously. Why whatever you were accusing other people of, you are doing exactly the same thing. This is what I wanted to point out. Second thing, when the trader comes to trade tomorrow in the market, he is becoming a pure trader. He is expecting जो व्यू दिया गया कल शाम को, ये कल मार्केट में अनफोल्ड होना चाहिए. Nobody is giving you trading advice here except one or two stocks with Sharad Bhai, and even he is not giving trading advice. He is telling you buy करके रखो. Very clear. ये जो एडवांटेज है फंडामेंटल एनालिस्ट का, इनके पास टाइम का कोई बेसिस नहीं रहता है, टाइम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है. ये तो बोलता है बाय करके रखो, सब कुछ अच्छा है, बहुत इजी है बोलना. एंड the only difference between the technical analyst and the fundamental analyst is the technical analyst is the only one who can tell you इस टाइम पे अच्छा लग रहा है, इस टाइम पे खराब लग रहा है, इवन ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस. बाय एंड होल्ड करना बहुत इजी है, पूरा दुनिया कर सकता है, उसमें कुछ नहीं. मार्केट कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली तो ऊपर आएगा ही. आपका स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है. सो यू आर सेइंग लिस्निंग टू अस, हम लोग इधर एक व्यू देते हैं. एंड व्हाट इज द व्यू? द बैकग्राउंड बिहाइंड द व्यू इज गिवन. Will I give my trading view, trading ideas? Maybe you want to give, maybe we don't want to give. I will trade on a different perspective. But that does not make you or me better or bad. So, अनंत 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 लिव इट ना, छोड़ देना यार. ना मैं दोगलापन यार नहीं, अपने से हजम नहीं होता ये. ठीक है ठीक. अरे चंदन भाई भी अपना दोस्त है, तू भी अपना दोस्त है, छोड़ो ना हाँ, यार. अ, सी मैं एक बात बोलता हूँ. एक शेयर ट्रेडर होता है, स्टॉक ट्रेडर होता है, लाइक अ हंटर, शिकारी होता है. वो रोज शिकार नहीं करता है, पर अपने हथियार रोज तेज करता है. हथियार रोज तेज करता है, क्योंकि उसको मालूम है हथियार तेज नहीं होएगा तो शिकार नहीं होगा. और अगर अगर उसमें पेशेंस नहीं होएगा तो शिकार आएगा ही नहीं. तो बोलते हैं शिकारी की तरह वेट करो, वेट फॉर द राइट टाइम एंड गो फॉर द किल. एक कुछ ऐड करो शरद भाई. हाँ बोलो. If anybody has read anything about markets, about basic अगर भी पढ़ा है ना, पहला चीज जो पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में या मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस में, you look at the market valuation in the current scenario. What is the current scenario telling you? It is bad. Yet this market is looking like it is holding very strong. So when you don't have an answer from the fundamental analyst point of view, you have to take in a technical viewpoint. Now, what is the market pattern telling you? The market since 18,600 is showing you a flat top with a declining lower trend line. This is called a declining triangle. This is the very basic you read in the very first few pages of any basic textbook of technical analysis. A market with a flat top and a lower slanting downline, which is pointing down, will in 99% of the cases unfold in the downward direction. ये देख के हम लोग कई बार बोला है ये मार्केट नीचे गिरेगा, yet it comes to come test the up trend line which is flat, which is between 18,600 and 18,200, which is the flat area for it. So ultimately we also have to wait till the entire pattern unfolds completely. उसके बाद देखा जाएगा. आज के दिन में इस पोजीशन में क्या बोलोगे? तेजी बोलोगे? It's just not possible to talk from any study point of view, be it technical or fundamental. It's very easy to say this does not work, that does not work. मैं क्या बोलता हूँ, आज आप सब लोग को डेफिनेशन देता हूँ
तेजी का और मंदी का। जी। आप बोलते हो कि आपका ध्यान तेजी है, समर्थ बोलता है उसका ध्यान मंदी है। ओके, बट व्हाट इट इज तेजी मंदी? तेरे पास जो शेयर है वो तो बढ़ते नहीं है, और तेरा ध्यान तेजी है। तो आप, आपका जो डेफिनेशन है तेजी वाला या मंदी वाला, इट इज बाय द शेयर्स यू ओन। If you own shares which are languishing, like Glaxo Pharma for years and years together, तुमको तेजी सोचने का अधिकार ही नहीं है दोस्त। खाली भाषण करो, बट अंदर का बात आपको मालूम कि आपका शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी ठहरा समर्थ, ध्यान घंघोर मंदी, जो बेचता है वो ऊपर है। तो क्या हुआ मतलब? So this applies to everybody, that whatever might be your view, निफ्टी 22,000 50,000 वॉट एवर, पर घर में यूनिटेक पड़ा है, उसका क्या? टेल मी। बात करने को तो ठीक है, अपने भी बात करते, चलो ये है वो है, पर घर में क्या है तुम्हारे? मेरे प्लीज। पास मेरे पास भी पड़े हुए हैं। नहीं। सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। 1000 सत्यम खरीदा था 5200 में, दो हम्म, 2000 में, आज भी पड़ा हुआ है सर्टिफिकेट। नहीं, नो, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि everybody is bearish or bullish, यस, करेक्ट। but it depends on their holding, and are they entitled to be bullish or not? बुलिश रहो Is- या बेरिश रहो, अकाउंट इज द वन व्हिच मैटर्स द मोस्ट। नहीं, नहीं, but नहीं, but 90% of the people in this phase, their stocks will not be performing. एक But पोल मैं ले लो ना, बोलता हूँ 800 लोग हैं, एक पोल ले लो। हाउ मेनी पीपल हैव रियली सीन प्रॉफिट सिंस लास्ट ईयर ऑन देयर पोर्टफोलियो? पोल ले लो, समर्थ भाई, यू कैन डू इट। नहीं, नहीं, छोड़ो मेरा ना, जाने दो मेरा ना खुद अपने। का पोर्टफोलियो 8% डाउन है, 8%। So anybody who speaks in any space, ये रविंद्र भाई है, उसको लगता है निफ्टी 27,000 होएगा, पर उसका स्टॉक तो सब डाउन है। वो क्यों बोलता है 27,000 होएगा? तो होप। ऐसा सब तो आई थिंक दिस डिस्कशन वेरी फर्टाइल यार। करेक्ट, अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। मेरे को बहुत तेजी लगता है। क्या है मेरे पास? इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है। अरे तेरी जान को बेटा मुझे। ये फैक्ट फाइंडर आया, देखो, ही विल हैव सम इंटरेस्टिंग इनपुट। यस, 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 फैक्ट फाइंडर बोलो। Hi guys. Sorry, uh, sorry, I had a couple of things to attend to. Can you guys hear me? या Yes, yes. So thanks a lot for the time. I didn't listen to much because I was just making my kids sleep. Uh, so just I pretty much missed everything that what people said. So please forgive me. And my thoughts at this point of time are, thing what's, I mean. If you ask me, the data that is coming out of the US is actually surprising more positively on the macro, which is in some sort of say means that the Fed will obviously, hike rates a lot more. You're seeing that in the short-term yields as well. Uh, and I don't know where. One of the reasons why we might we're still seeing. I forget about India for a moment, right?
Uh, wha- see, India. See, at the end of the day, I just look at it this way, right? Is that you got to look at India as your. It's like Turkey, right? Turkey, the market's gone up 80%, 70%, and the currency's fallen 50%, right? So, if somebody just looks at the market and just says, you know what? See, look at it from a macroeconomic point of view. If the RBI keeps, allowing a decent amount of liquidity in the rupee in order because we are short of liquidity right now, then in some sort of sense, you are expanding the balance sheet, while the US is reducing the balance sheet, right? So logically, your currency, you're printing more, should depreciate, right? But by keeping rates easy in an inflationary environment, your real asset values go up. So never look. The way I see it is, you can't look at, it's like Turkey, right? Turkey's gone up 80%, but the currency's fallen 50%. Yes, last year it went down. The same thing out here. You can't look at India and say, you know what, India's flat. I mean, India's not gone anywhere for the last, year, and its currency has depreciated so much over the last 12 months, right? And I believe the currency will depreciate a lot more, because, especially in the next 3-4 months, uh, simply because I believe crude is going to go up from here. I mean, just for perspective, the entire speculative community, worldwide speculative community, in terms of crude oil positioning, is down massively. Okay, if it was any other scenario, crude oil should have crashed. Okay, logically, you've had a slowdown in the US, you've had a horrible situation in China, and you've had an unwinding of positions where people have gone from long to short. You should have ideally seen a massive correction in crude oil. And now, post the US elections, you will have, to me, the biggest pivot is whether China really reopens. Because the moment China really reopens, you can see 1 million barrels a day of incremental crude demand, at least more than that. That's going to be very significant. Okay, so if you have that in mind, plus you have, over the next 12 months, you have about $300 billion of refinancing requirements by India, forex liabilities by Indian entities. The point is, how, at what rate are you going to refinance it? Today, the short term rate in the US is 4.5, or I mean 4.2. If you're investment grade, and India is like at the bottom of investment grade, if you take the average investment grade yield, it is about 6% or 5.8%. You add to that, at the bottom of the investment grade yield, which is where India is, you're talking about at least 7.5 yield, plus your currency depreciation of 4%. Why would anybody even refinance? They are going to try and borrow domestically. Problem is, domestically, for every rupee that is coming into bank deposits, there's 120 rupees that is going out as loans. So there is just no money. We are running a deficit. So my simple point is, uh, you're having a crazy amount of yield. There's a lot of pressure. The RBI is obviously selling a lot of forward, which is encouraging a lot of exporters to come and supply dollars, which is why you're seeing the RBI not running down their forex reserves. But they can't continue like this forever, because at the end of the day, you're going to get hurt. Because what's going to happen is, if I am an importer, I'm going to say, listen, next 12 months, my cost of importing is only up 2%. Let me buy and lock in so much of imports for the next 12 months. Let me, increase the amount of imports, because I know eventually at some point of time the rupee is going to depreciate. So that is, in some sort of sense, is going to encourage imports rather than discouraging imports, which is going to hurt you at some point of time. So, the combination of US thing, was it, elections getting over, at some point China opening up, because China is really confusing as to whether they're really opening up or not opening up. But as you can see, right, any news about them opening up will just has pushed up the market a lot. Although I just think that it was like a rubber band, it went down so much, it's obviously gone up so much. So I would just want to wait and be sure about it. Um,
Thirdly, is you have a lot of dollar liabilities. So I think that I think that the rupee will depreciate a lot more from here. As far as tech is concerned, I don't know how many of you guys noticed today Stripe, the world's probably one of the most valuable fintech companies in the world. They decided to reduce the employees base by I think about 15 to 20%. So I think that all this, this tech, digital spend, and all that stuff is going to really come down very badly. And remember, a lot of the digital spend is all marketing budgets. It is not. It is in some sort of sense discretionary by the marketing team. Right today, you're not really bothered about it. I mean, you spend on digital only when you say, "Okay, I want to grow my business." Also, yeah, there is, it's important to run the business to some extent and to be in touch with the customers, but you also have to grow your business. That's what you're trying to do. And if you realize that business is not going to grow in any case, why would I use those budgets at this moment of time? Right? I mean, if companies are going and laying off people, they're certainly going to be cutting their IT budgets and IT spend on digital for sure. So I think that's definitely coming through. Sharad had asked me that day about the tech stocks, Indian Accenture and Cognizant falling sharply. See, I have seen this before. Eventually, the Indian tech stocks follow what happens to Accenture and Cognizant, especially Accenture. And the simple reason is that Accenture has a far better business model, far better ability to manage margins, and has been growing at a much faster rate. So any foreign investor is going to say, listen, let me sell the Indian US ADRs of Infosys. That'll cause the weakness of the US ADR, which eventually comes into the Indian ADR. Indian ADR, Indian local stock falls down. Eventually, TCS discount expands. So then TCS comes down, then the other come down. So it just takes some time for this to happen because it's all driven by active fund managers. It doesn't happen instantaneously. Somebody notices there's such a gap, that gap will eventually narrow because these are active positions. As far as domestic mutual funds are concerned, there's one thing every domestic mutual fund guy is crying because they're getting screwed by Adani Group. Because more Adani stocks come into the market, into the index, they are unable to perform. It's really hurting. So all of them are praying that Adani stocks keep going down. Uh, as far as the data from the macros concerned, I was having an argument today with somebody who said that from the data that he saw for card spend and debit card spend during the Diwali season, it was not up very much compared to typically what happens on a month-on-month improvement. See, as far as I'm concerned, FMCG sales in India are real shit right now. I mean, I put out something on Kantar. Kantar is a global company. It's a part of Group M, which is the world's largest advertising and marketing company. They pretty much consult for every single FMCG company in the country, right? And I think they have said that sales are really bad, especially in rural India. Nielsen's come out and said that rural India volumes have declined 10% in this quarter. I can't think of any time in the past when this has happened so badly when there's no disruption, right? You can't compare it to COVID because COVID there was there was a lockdown, there was a disruption. Here you're talking about no disruption and a 10% fall in volumes. That's really hurting. I looked at all, even the QSR companies. If you actually look at on a per store basis, they are not seeing revenue growth. Can you imagine you running a McDonald's store or you're running a Pizza Hut, or running a KFC? You're not seeing revenue growth year over year. And the only reason you're able to see that, the company is able to see that growth is because, is simply because there is, I mean, not revenue growth, volume growth. There's zero volume growth. In fact, no. I think there's in fact no revenue growth if you adjust for the number of store openings. So, for example, I think it was Sapphire. They opened on an average, 6-month average, they opened 36% stores and their revenue growth was 37%, which means the average store has a flat revenue year over year
When inflation is up 15 to 20%, you go to any restaurant, QSR, any place, everybody's increased prices by 20% at least. So there is no volume. There's decline in growth. In fact, if you look at the data from that guy who put it out, he said if you look at credit card numbers, people have done offline buying because they're not spending as much on credit card. Typically, what they used to spend during previous Diwalis. So I said to him, but you know what? State Bank of India has put out a report saying that in the first time in the last 15, 20 years, you've actually had a decline in currency and in circulation during this Diwali week. Typically, currency in circulation increases during Diwali week because people withdraw money to spend. And this time around, it declined. It's never happened in the last except the last 20 years. So what it says is that the economy is in deep shit. It is showing up in a lot of results. But you know what? LIC, EPFO, retail, everybody's just buying. And so the only way out is that the currency keeps depreciating. Simple as that. Fact finder, I have a couple of questions. As far as tech is concerned, I saw on TV today that so many companies have laid off people abroad in San Francisco and all that. So definitely over here also it will happen. And Twitter also chucked out a lot of people in India. Now, don't you think that it's very, very problematic for our tech industry and for our tech workers? See, I don't think so. Let me put it this way: I don't want to compare a startup with an IT services company. A No, start, no, a no, startup I'm not is comparing. risky. Yeah. A startup is risky. So you can see a lot of, for example, I was looking at a report somebody shared where they're actually tracking layoffs. And apparently, this year, there's been about 98,000 tech guys who've been laid off across the world, which is a pretty decent number. And post COVID, it's about been about 190,000 people, which is quite a bit considering the fact that you actually had a massive number of hires as well. But you know what? So I think that to compare, companies which have been just funded by free money and now they're really shutting down. I wouldn't want to compare that to IT services. But let me put it this way, right? IT services, the digital spend is a discretionary spend and not an operational spend. It is a spend for by business development people and marketing people. The earliest IT cycle was about operational efficiencies, which is why I believe, which is one of the reasons why I think there was an article saying that Infosys has reduced, despite showing a decent set of results, they actually cut the variable pay to 60% of what they normally. So they should, I mean, variable pay is a very small part of the people's pay, but it's a signal. If I'm cutting, instead of giving 100%, if I'm giving 60%, it means things are not so good, right? So the fact that they're doing it now, it means they're already getting signals from their customers. What it means is that when the customers actually start cutting budgets, you will see that next year in the March quarter onwards. You will not see that so soon. No. Why not so soon? Because with the way the US companies are positioned, why will they wait? They are cutting staff. So they will cut the budget immediately only. So, but Sharadji, please understand that the fintech companies, a lot of them one build their own systems. They use a lot of SaaS products in to run their business. They don't necessarily, employ IT services companies. So I mean they do. Some of them do for sure, but I'm just saying it's not as dramatic. But if you ask me, the other thing is the euro. The euro is a country. Okay, so right now what has happened is that, and let me tell you why I want to shift gear to euro, because
and the euro is showing a fair bit of stability. Hmm. But in terms of the currency, but bear in mind that if you just compare the inflation in Europe versus the inflation in the US, and the job scenario in the Europe versus the job scenario in US, the problem the Europe has is that it can't really raise rates too much because it's already in a bad scenario. And so, as a consequence of that, I think that they will do a pivot in Europe at some point of time. They will raise rates, but they will come with a pivot, which means that eventually the euro will decline furthermore, which is not good for Indian companies as well. Because, see, on one side, your business volume also reduces, your revenue in terms of currency reduces. They, at some, in certain businesses, become a little more competitive. The market itself reduces. So, I'm just saying that there are going to be some disruptions. I was also looking at UK, US, the cost of borrowing for buying a new car. The average ticket size of a car in the US today is $40,000. Pre-COVID, it was $29,000. So there's almost a 30% increase in the average cost price of a US car. Add to that your rate of borrowing. That's gone up from about 5.5, 6% to 7.2, 7.3%. And remember, in the US, unlike India, people take cars on lease for years, right? It's a very big lease market, and your lease market and your lease rentals are primarily based on your interest costs. So, to that extent, I think there's going to be, the auto market in the US is going to get hit. The auto market in Europe is going to get hit. Um, Manufacturing is going to see a very bad scenario from Europe is in next year, not this year. Next year is going to be worse because remember, this year till July, August, uh, gas supply to Europe was fairly decent. Next year, they're going to run down their gas supply. The next year, going to have a problem. That's when, and next year, all the tariffs gets reset next year to higher levels of tariff. So just keep that in mind. Yeah, don't scare too much, yeah. No, I'm just telling you, I mean, earnings are going to get cut. Very simple. I mean, Yeah, I, yeah. No, Sir, if I I have permission to speak, I wanted to ask a question to Fact Finder G. He had posted one but on Twitter. He had posted about this ESMA to withdraw the recognition decisions of six Indian central counterparties. So I just wanted him to briefly, explain what is the consequences that will be there of this decision, if you may, please. Thank you. see, be honest, I haven't done enough of reading on that. Uh, that is a very technical thing. But and I haven't spoken to anybody about it. I'm trying to understand it myself. But it seems that at least till March 2023, the European securities regulator has allowed a settlement of a lot of securities by some of these the Indian settlement agencies. Once that 20 the reason is that they have requested the Indian agencies to share a lot more data, and the Indian agencies are refusing to do that. So I really don't know what's going to happen. Typically all these problems get solved at the last moment, but yeah, I mean, I don't have a very strong understanding of lie. this. Fact finder, one very simple question. World equities vis-a-vis Indian equities. How much are they overvalued? 10%, 20, 40, 50, 60? A ballpark figure. Sorry, I missed the question. World equities, Mm. your and Indian equities vis-a-vis Indian equities. How much Indian equities are overvalued? 10%, 20, 40, 60, 50, what?
according to you? I mean, if let me put it this way, right? Let's start from basics. Uh, let's look at interest, right? Yeah. Uh, so ideally, our Indian GSEC should be in the range of about 8.5%, possibly 9%, Yeah. which then means that your cost of equity could be about, I mean, if you're talking about 9% on a GSEC, then your reverse PE for a GSEC is 11. Mm. Okay. You give about, you know, uh, 4 5 PE typically, or a 20% premium, 25 30% premium max. You know, just bear in mind one thing. If you look at India's earnings growth over the last 15 or 20 years, Mm. earnings growth of India has only been 11 to 12%, which is the nominal GDP growth. Can you imagine the best companies in India? Mm. Overall Nifty earnings over the last 15 20 years has been the same as nominal GDP growth. That's it, which is a little surprising. So, if I were to take that into consideration, all right, and just say, okay, fine, 11 PE is what the GSEC is. I want to give 14 times max because I'm getting a little bit better growth, 15% growth. I think the fair value of the Nifty should be 15 times max. Max. Okay. And I think what's it? Then you just do your numbers. The problem is if you actually look at there was a very interesting, chart that I think this guy Abhishek from which is that firm. There was he Abhishek from one of the monetized firm or something. He shared a nice P chart for each sector in India. The only reason Nifty is looking cheaper at 21 or 22 times, I don't have the number right now in my mind, but it's about 21, 22 times. The only reason it's looking cheap is because you have NTPC that's looking cheap, you have ONGC, you have IOC, you have all these companies in the index, and then the PSU banks. Okay, now the PSU banks and the PSU companies, PSU banks don't trade on PE, they trade on price to book, right? But because of these companies, the index is looking cheaper. The moment you remove these companies, our index looks really expensive because every sector is so expensive. So, you were not here. I give statistic that the market cap is 280 trillion rupees, out of which Nifty 50 is 140 trillion. So 4950 companies have a market cap of 140 trillion, the balance. Now this is really lopsided. And out of 140 trillion Nifty 50, only 15 companies are major. The rest of them are chinku pinku. So really we are very, 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 very screwed. Skewed. Very skewed. Our market is skewed. If you look at US markets, barring those two, three companies, everything is evenly spread here. Anyway, what to do? So, any suggestions for our investors, fact finder, No, no, sorry. What suggestions on what? on what to do, how to live, how to invest? No, no, no. So at the beginning of the year, there were three. There were. I wouldn't say beginning of the year exactly. I would say November end. I bought pretty much my biggest, bets. Three bets were ITC, uh, NTPC, and Axis Bank. Simple reason was, even then at that point of time, I was not so bullish the market, but I said that, you know what, ITC, nobody owns the stock, valuations are cheap, and earnings growth will come back. So at least I won't lose money because I'll earn dividend. Hmm. Same as the case with NTPC, right? Uh, and the same as the case with Axis. Everybody hated it, all right? At this moment of time,
Where I would park my money is, um, I'm still positive on utilities in India because, see, listen, I mean, if we don't grow, I am so negative on solar. I think the government of India is doing a big mistake just focusing on solar and wind power. And they're also now talking about hydrogen, which is stupid in my view because, I was reading, I'll probably do a spaces once on hydrogen because I think hydrogen is a big challenge. There are only 16 ships in the world that have, that can carry ammonia, and that's one of the ways to carry hydrogen. Okay. In fact, there is no proper ship. They're probably building the first ship or just one ship in the world who can actually transport hydrogen. It's a complicated thing. You have to reduce the price of the, the, the coldness of hydrogen to 150 degrees minus. That technology is not easy. People are in their minds that they're going to be doing hydrogen exports and all that shit. It's not going to happen easily as people think, right? There was an article recently in the US where they discovered that the ethanol refineries, because they were not following policy, the carbon emission from them pretty much negated all the carbon emission reduction from using ethanol. I mean, that's a joke, right? So, so the point is, why am I negative on solar and wind? Simply because you cannot depend on them. There are days in UK and Germany where the wind just stops. Okay, and you're seeing the kind of changes in weather patterns world over. I mean, just think about it, right? What if you had? Can you depend on solar and wind? In, for example, in the NCR region today or close by? No, you can't. No, suddenly because of this entire the wind patterns changes because of the burning or something happens, right? So you only, I mean, and this is a fact, everywhere in the world where the proportion of solar and wind has gone up, the effective tariff has gone up. It has not come down, it has gone up. And that is a problem in India, that you are actually going to see, if we want to become a manufacturing hub, we need to have lower energy costs, we need to have lower logistics costs. I don't see any of those two happening, and that's going to be a big challenge for us. See, I will give you a tip. You buy that share and forget about it. Adani Enterprise. You will make tons and tons of money. Okay, You fact serious? finder. You serious? Yeah, yeah. It's killing me. You're really joking on me. Why wouldn't you have told me? Why wouldn't you have told me this like a year ago? Damn it! No, but if Okay. you ask me on a serious note, I let me go sector by sector. Okay, Nay, I just a moment, fact finder. There is Dr. Anish. We'll see what he says, if you don't mind. please, Yeah, please. doctor. Hi, hi, Sharad sir. Hi, Fact Finder. Yeah. Everyone. Comparatively new to spaces and I joined very late. I'm sorry for that. No, 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 Uh, it's okay. I'll tell you two things. The quarter four, which is there in the West right now, and quarter one and quarter two of 2023 are going to be the rare watershed areas. And once we get into those watershed areas, it is going to become extremely hard for the equities to come out of it. The overvalued stocks, and as has been pointed out often, the CAGR which is actually being quoted is far lesser than what we are actually having in notional terms. So we must, Sharad sir asked what stocks to buy. Uh, Adani as a stock, when you suggest it's a news-based stock, and No, yes, no, I it might give was you returns. joking. Yes, Doctor, I I know. was joking. Yeah, I know. So it might give you returns, but you must understand that this is what we are sitting on. We're sitting on PE time bombs. And these time bombs, once they explode,
the growth stocks will all turn into meltdown, and we are going to go into deep shit. So I would really encourage people, and it probably might sound a little off, but I would encourage people to sit on cash. There'll be a time to invest, and when that time comes, you shouldn't be bereft of opportunity. So, and going on to sectoral investments, which sector is safe? FactFinder recently put on a lot of data about FMCG, and you will see the consumption story in India is going down significantly. Similarly, the newer sectors, artificial intelligence, solar, sustainable energy, they're not attracting the capex growth as expected. So I would certainly suggest to avoid a very attractive sector which appears to have a growth potential. Look at the valuations, look at the fundamentals, and you'll realize the logistical and legal issues associated with it. So there is a lot of time available to study this because right now market is on a boom which is not supported by any fundamentals. So I am a strong believer that we have to retest 12,490, which is the pre-pandemic high. It has to come. 18,800 might come before that. The FIAs will pump, which is characteristic of them. They'll pump right now and they'll dump when everyone is expecting 21,000. So beware of longs as soon as we go near the 80H and cut down your long positions and sit on cash. That would be my only advice. Okay. And anything else, doctor? Well, not really. You people are more pros at it, sir. Anything I can answer, I'm more than ready to happy to answer. Yeah, definitely. Uh, Amit Chaudhary, are you still there? You want to ask? Amit Chaudhary? Wondering you want to say something? Yes, sir, I'm coming just in 1 second in a while, please. Harish Goel. Hello. DGRS is there, sir. Finder, in the interim, can we talk about the GSEC disparity in the rates? No, I mean, I'm not too sure, Doctor, what to talk about because I'm just saying that uh, India's GSEC first is thinly traded, right? Just like stocks in India, India's market is not a very liquid market. Right. Okay, and India's GSEC is also thinly traded, and the good thing is that only 1.5% of the GSECs are owned by foreigners. So the impact by them is not going to be instantaneous. It can be managed, but there is no at the end of the day, if you try and control your GSEC, you control your interest rates. So Right. then effectively what happens is that your currency turns out to be the carry trade currency, which makes no sense, right? So either your currency depreciates or your rates go up. You can't have both. And the RBI is not allowing us to do that. So So RBI is just the RBI is very happy when the rupee depreciates. They don't want it to depreciate rapidly, but they are very happy the rupee depreciates because their assets are in dollars and their liabilities are rupees that they print. So if their liabilities reduce, they make a profit. correct. Okay. And one more thing, if the rupee depreciates, things become more expensive. If things become more expensive, GST revenues go up. Yes, I think the GST conundrum is another thing which we discussed last time, and it's a big issue in itself. The waybills and everything and the refunds, I think it's a big mess. Going on to those numbers and just calculating GST returns on those numbers is something which is a big thing created by the finance ministry to confuse people.
No, actually, doctor, there is no confusion. It's just that people are looking at the wrong numbers. People are just looking at GST number as a whole. Right. Instead, they should look at GST numbers as CGST and SGST, because finally, when you and I pay a bill, we pay CGST and SGST, right? IGST is intermediate, that gets paid on imports, that gets paid on intermediate products. If you look at India's imports, they continue to go up a lot. Yes, our exports are also going up, but our current account deficit is obviously expanding, and and it's showing up in imports, right? So the point is, as imports continue to remain high, our IGST goes up. Plus, if you go back, September 2021, the government introduced GST, a lot of products, which are base products like your rice, your wheat, or whatever. Maida, all these basic products, food products, and a lot of basic commodities, they raised the GST rate from 0 to 5%, and in some cases from 5% to 12%. So because of that, you're seeing that impact, right? Plus your currency depreciation. So the right way of looking at GST is to just take SGST and CGST and divide that by your WPI and see if there is actually growth. And you will notice there's no growth. Because the fact of the matter is, which is why companies like Hindustan Unilever is saying that the industry has declined 10%. This is why Kantar is saying that there's no growth in volumes, because it's all inflation led, Now, right? fact finder, I want to jut in over here. If you take the figures of last 5 years, 5 or 7 years, there is no growth here. Automobile or anything you take, there is no growth. Damru, but people are just hankering for growth, but it's not there. So whatever formula you devise, you will come to a conclusion there is no growth. And I don't use any formula and just compare the numbers that were 5, 7 years ago are the same. Where is the growth? Yeah, fact finder. Directly, let me put it this way: there is some pockets of growth, of course. Um, for instance, electricity consumption. Okay, that is growing at the rate of 5-6%. It's not great, but it's growing at the rate of 5-6%, which has been growing at the rate of 5-6% forever. There is, growth in, for instance, coal production. There is growth in, the tar that you use for roads. There is growth over there. 4-5%. अरे Uh, ठीक है यार, but there is there is growth in petrol and diesel consumption, no, right? no. There is degrowth in petrol and diesel, I suppose. I think I'm. Sir, I just wanted to intervene here. Like what Fact Finder ji said about IGST, that is not exactly true. See, sir, I'll just give you one small example. If you are providing services within a state, then SGST, central GST and state GST applies. But let's say you're providing services. Let's say you're in Maharashtra and you're giving services in Delhi, or you're selling goods to that. That is the time the IGST is there. It is not got to do with the import thing. And second thing, sir, about the GST thing. See, sir, what they have done is they have smartly, they have changed the laws. Like before, the service tax laws were like if you are having a proprietary concern or a company or anything, so about 20 lakhs or something, service tax was you were liable to pay. But now the total aggregate of income, if it crosses 20 lakhs, then you are liable to pay GST. So what has basically happened is the universe or the catchment or the number of people who are eligible to pay GST has increased. So that is what has happened. And another thing, sir, uh, like I run a security services company. I'm telling you, our margins are only 8%, but sometimes 5%, and sometimes the companies don't pay us, so we make a loss also. But the GST that we have to pay by 15th is like we have to pay 18%, whether we get paid by the our company or not, to whom we are providing services. So it's actually very bad. And if you don't pay by 15th, because you're not getting paid, and if you make a delayed payment, you have to pay penalty,
you have to pay interest, and then that won't be even admissible in income tax. So it's very draconian and very difficult. I don't know, like how companies are going to survive, especially the small ones. Wondering, you run a security service, you said. But the payments over there are only after 6 months, 8 months. So how do you finance the GST? Sir, that's why, sir, after running a security services company for so many years, after COVID, I am kind of thinking of changing my career. It's become very difficult. Not only, sir, GST, we have to pay ESI, we have to pay PF. Now, if you go to a company, now nobody has got that kind of money to pay. They say, "Bhai, tu 25,000 aata hai with all the statutory. Who's going to pay 25,000?" So they say 15,000 mein karo, 17,000 mein karo. You can't do that. And if you do that, then ESI and PF will come and sit, and they will say that you have paid less, and you have to pay more. So the laws have become very strict. Everything has become very strict, but there is nothing is there, sir. But the government will come and take the money. Now, what is going to happen is, if you're going to do a business and government will not have money, they will find out ways to take money from you. They're going to become the gundas. So it's better that you don't do business. Yes. And where are you located? Sir, I'm located in Hyderabad, sir. Okay, good. Just wonder, I just want to tell you something. You're right that if a company is giving one service across the state, you pay IGST. But bear in mind that finally that corporate is utilizing the input tax credit, right? And if they are giving services to another entity, they will take care of that input tax credit, right? So at some point of time, eventually, somebody pays the SGST and CGST, because this GST is eventually intermediate in its very definition, right? Absolutely, I agree with you, and it's very good for a manufacturing industry. But for a service industry like me, if I am providing services and I have to pay GST, the only way I can claim a GST, the input tax credit, is if I go and buy a iPhone or something like that and bill it to the company. That's the only way I can claim ITC. Otherwise, there's no other way I can claim. And the problem with security services is that uh, these days the payments are not coming properly, unless if you have a very, and now we have made it a policy that if the client is not paying me na, I'm not going to, like if he says मेरे को 1 महीने का क्रेडिट दो, वो दो, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को नहीं करना काम, तुम मेरे को 5 तारीख तक पैसा देगा तो मैं काम करेगा, नहीं है तो जाओ। एंड वो 5 तारीख को 10 12 15 तारीख करता तो मैं गार्ड को डाउन कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ हम नहीं करेंगे काम। आई हैव बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। Wondering, in Hyderabad, weapon is allowed? Sir, as per the Pasara license and the latest Arms Act, no, sir. You need to have, sir, an individual with an arms. He cannot provide protection to other people. Yes, so So, it is only for self-use. yes, sir, absolutely. There are arms are issued only for 3 uses in India. One is for sports, personal protection, and for crop protection against wild animals. Yes. अरे Okay. अरे वेपन्स में बहुत सारा नाटक है भाई साहब. You cannot carry out of municipal limits. You cannot do this. You cannot do that. But quite a few headaches with that. नहीं नहीं, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसके लिए पूछा. Anyway. हाँ, मेरे पास था इसीलिए मैंने सरेंडर कर दिया, इसीलिए बता रहा हूँ. Quite a few headaches. Kalji, we just should do one spaces to explain this entire, the CBDC, which is the central bank digital currency. We don't need to do it now, but we should do one, because I don't think when they introduce retail CBDC, I think people are going to get surprised at the extent you can be controlled with that. I think we don't even understand what can happen through that. But we should do. Fact finder, I do have a question. What is the grand idea of this digital currency? Isn't the only thing that will change is the government and RBI can keep track of where it is going and who's transacting in it. Isn't the UPI right now as good as a digital currency?
No, Sharad no, sir, we no, should no. do this. We should do this as a whole talk in the next space, I think. Yeah, it is. It's very. If I tell you about what the possibilities of a central bank digital currency is, there are obviously good things, but the bad things are so insane. Wow, you will it'll sound like one of those stories like Black Mirrors on Netflix. Exactly, which is why I don't think it will be taken up by many people. It should just end the flop show. Anyway, let's speak But about it sometime. but Sharaji, you asked me which are good sectors. I still think I like utilities because valuations are cheap. Hmm. There's still decent earnings growth. Hmm. There's dividend. Some of the utilities are the best debt financing in the market because of their balance sheets. Hmm. They sometimes borrow cheaper than large financial institutions. So to that extent, I still like the utilities. I still like the banks, which is a very large sector. My view is that the peaking of I believe that the RBI will hike up rates a little more aggressively, which means that the peak net interest margins of the Indian banking system will occur. Initially, I had calculated by September, October. I'm pushing that by about 4 months because I didn't at that point of time expect the RBI to rapidly increase rates. Now I expect RBI to rapidly increase rates a lot more. So as a result, when RBI rapidly increase rates, you will have the net interest margin of banks actually improve, this will occur till maybe February of this year, next year. So it's safe to say that March quarter is when net interest margin peaks. Hmm. No, but banking any which way will do good. Peak, So no some of the peak. utilities associated with banking, Power Finance Corporation for that matter, as a fact finder was saying, some of them are at a very good valuation and they're giving extremely good dividends. The TTM is very good. And I think those are passive buys, which I can definitely say would be very good for the long run. That No, is one of them. no, but So Doctor, let me just correct you here. If you look at all the results of all the NBFCs, they actually did yeah, very badly. And the yeah, reason is that correct. they never anticipated such a liquidity shortage in the Indian banking system. And because of that, they're raising rates at 8.5%, 9%, and so they are actually, effectively lending at negative margins now, which is probably going to continue for the next, 2 quarters. So yeah, I mean, I agree with you overall that they look cheap. But the question is that do they have a trigger? Because remember, Indian market is a lot of momentum driven market. Yes. The other point is that we are in a time correction phase. So in a time correction phase, the time will pass and the prices won't move and the opportunity would be lost. So yes, I do agree to you totally that the growth may not be there as much and the capex expansion may not be there as is being projected. So NBFCs overall, especially the overvalued ones, the growth dream stocks should really be taken into consideration to avoid before we do that step right now. The undervalued ones, we can still look at it, I think. Another sector is railways. Is doing very well, it seems. Sorry, what did you say, Sharadji? Railways. Anything to do with railways is No, doing no, well. you're right. You're right, Sharadji. It is a decent, but I'll just tell you one thing. So I was reading this report that was done on the history of the last 40 years. I'm trying to locate that report. I kept a copy of it. What they did was they looked at 70 or 80 different economies, and they looked at, I'll tell you why this is important. They looked at what is the sustainable GDP growth
when your physical deficit, which is in our case, India's physical deficit is about 6.5%. What is the sustainable? And remember, India's government debt to GDP is about 80%. When this government inherited, when Modi took over it, I think we were at about 45-50% debt to GDP on the government side. Now we are at 75-80%. So according to them, their analysis suggested that the moment you break 90% debt to GDP, no economy has shown growth, sustainable growth greater than 4%. Okay, and that's a big problem for India, because if you can't grow at more than 4%, and why 4%? Because then the government's borrowing capability reduces. And bear in mind, the government today has a problem. It has to reduce the deficit. It has to reduce the deficit number. So as a result, the ability of the government to keep spending will reduce over the next 2-3 years. I'm not saying they won't do it in the election year, because I'll give an example. Very interestingly, I don't know how many people know this, but the government purchases of wheat in the current season was down 57% year over year. They purchased lesser wheat from the market, 57% lesser wheat compared to last year. The second data point, which will surprise a lot of people, when in the last 3 years, when the government said they are going to give extra food to people, if you look at the difference between food produced, food exported, and hence food and the amount of food at the go downs, if you adjust all three, because go down food is inventory, food exported obviously goes out of the country. I'm talking about grain and grain produced. The net consumption of grain in India has not grown very much in the last 3 years, despite the fact that the government has told people we're giving people more food. Because if I'm already getting 5 or 6 kgs per head per family, which is 24 kgs of grain per month, I don't know how many people consume more than 24 kgs of rice or wheat a month, right? So if I'm already giving you 5-6 kgs and I give you 10 kgs, you're not going to consume those 10 kgs. You will take those extra kgs and you will sell them in the market, because you're getting it at a discount, and you will sell it at a profit. And that product eventually gets exported, which is why, but this year, because of the very bad, hot season, the amount of wheat grown had reduced by 15%. People were expecting a growth of 5%. We actually have a decline of 15%, which is why we shut down exports. And which is why the government's purchases of wheat has reduced by 57%, which means that the government has not utilized the money that they have allocated for subsidy, food subsidy. And I think that is the reason they put an embargo on wheat export, other than the two commitments they have, because they're really in a soup with regard to the wheat production and the costing. I think Sharad Bhai lost his connection. Hello. Anyone else wants to speak? Yeah, may I proceed? Yeah, okay. You can ask, you Hari, want to Hari. ask a question? Yeah, Amit. Sorry, I don't have any question. I have my point of view to put here. Okay, fine. Okay, hello everybody. So, actually, the topic was quite diverted in a different direction. We were talking about basically for trading